He taught at several universities, including the University of Hyderabad and Heidelberg. Hearty welcome, Merchant sir. Can you hear me? Can you hear me? Okay. Gay literature in India, a personal history. Literature is not about nature, but about Homer. This means future writers build upon past writers. How could I write a new gay literature in India when at that time I had no known Indian role models? I depended upon Oscar Wilde, Walt Whitman, Garcia Lorca, and Allen Ginsberg, who references both Lorca and Whitman in his Supermarket in California. Wilde writes in A Ballad of Reading Jail, each man kills the thing he loves, quoting Shakespeare's Measure for Measure. So gay love is complicated at its very beginning when it is written about by us in our age for our country. Whitman talked of the never-ending urge of the world. Lorca talks about butterfly or mariposa, butterfly of the sky, blue and green, here and there, stay, stay, butterfly of the moon, the sky, here and there, stay, stay, where were you ever there? The furtiveness of gay love banned in Franco's Spain, for which he was killed. And Ginsberg, the gay bard of America, lost in a supermarket. Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons? I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys. Later, I wrote Yarana. Before me, there was Sakhiyani by Geeti Thadani. After me, Vanita and Kidwai's Same-Sex Love in India. My anthology is an anthology of modern gay stories, and still later, I found examples for my book, Indian Homosexuality, from the Hindu stories of the fusion of Shiva and Vishnu as Mohini in the Ardhanareshwar Rupam, the stories of Krishna and Balram, and the Sufi songs of God as a male lover in Sarmad and Rahim. Rahim on the thread of love. Rahiman dhaga prem ka mat todu chitkai, टूटे फिर से ना मिले मिले गांठ पड़ जाए. Love's thread once snagged will forever be knotted. Wali Gujarati, also known as Wali Daphne Aurangabadi, he writes, खुगर नहीं कुछ यूं ही हम रहता गोई के माशुक जो अपना था बाशिंदे दक्कन था. It's not casually that I've been possessed by Urdu. He who was my love was that native of the Deccan. That native of the Deccan was who he called Mera Sardar, a long-haired boy whose tongue was in his tongue, in whose Sufi love he passed out so much so that his murshid forbade him from writing poetry. Alas. And then there is Namalvar in South India, who talks in the female voice to God. I was free to write my pastiches of Anglo-American gay romantic poetry in a postmodernistic vein, replete with references from Bhakti and Sufi poetry. I will read one poem of mine, Love Duet. How can two bodies in two places in tandem grow? Wine is like reverie, reverie like wine. It was but yesterday a seed was sown in the dark of the night. The first daylight brought fruit. It was pressed, body became spirit, flesh became song. But these lines are for angels. We are men, and then we are beasts. In bed, you sleep, your wine reverie, you do not hear me in another city.
You are not you. You are in another place in a dream of growth, of plenitude. And so you slip and fall into wine. It is Circe that makes men swine. You wake me with the sun, but I'm still in a dream, a long dream of the sun, S-O-N sun. Today, my hand falters at the beard stubble, and where I have spilled the wine, you to stir and you to stir and become a beast. I falter and let you dream in the long midsummer night. It is the sun, S-O-N, that pierces the soul cold and rises in the sky. I wrote this poem on 21st June 2003. I don't remember for whom. Lovers die, love remains. Lovers die, love remains. Meanwhile, also in Bombay, R. Raj Rao, also an academic a few years younger than me, was writing demotic verse in Bombay. His two demotic lovers in scatological imagery. This was in direct contrast to my Orphic babe. We were sober in life and mad in art. I was mad in life and sober in art. Raj Rao makes sly, offhand comments on religion, caste, and gender. Here is his comment on religion. The neon signs advertise purgatives. Purgatives are purgatory. They almost make you believe. Here is his comment on female house help of a gay bachelor. Shantabai, who comes once a day to wash her undies, goes many steps further. She thinks a man without a wife and kids is cremated by the Bombay Municipal Corporation upon death. You wonder if she's making a pass. This is Raj Rao's comment on Bombay gay life, which he calls Bomb Gay. Kashmiri American poet Aga Shahid Ali wrote of the loss of Kashmir in Amherst, Massachusetts, in the Americanized form of the Urdu ghazal, lamenting Kashmir, his late mother, the death of a boy lover, of the Urdu language, and of the iconic singer muse Begum Akhtar before his own early death from brain cancer. A time to recollect every shadow, everything the earth was losing. A time to think of everything the earth and I had lost, of all that I would lose, of all that I was losing. This is his poem, Snow in the Desert. He sees snow sparkling miraculously on a desert cactus, and he remembers the diamond rose ring sparkling in the darkness of Begum's last Ahmedabad concert during a blackout during the Indo-Pakistan War. And her voice coming out of the darkness as if she was already dead, as does Ali's voice to us today, 2 decades after his death. Ali's conscious imitator and my heir in gay poetry in India is Akhil Katyal, a bilingual poet from Lucknow and Delhi. Here is Akhil imitating Aga Shahid Ali's tribute to Begum Akhtar in his own tribute to Farida Khanum's ghazal, Ab Jaane Ki Zid Na Karo. When Farida Khanum sings now, she does not hide her age in her voice. She wraps it in paisleys instead, and for a moment holds it in both her hands before drowning it in our sky. When she sings now, she knows at the end of that note, when her voice breaks like a wishbone, he will stay. This is from Akhil Katyal's anthology, The World That Belongs to Us. He, with Aditi Angiras, has edited translations of Bhasha gay poetry into English. 2 translations which stand out for me are the poems of the martyred gay poet, Professor Siras of Aligarh Muslim University, as translated by Anish Gawande. And there is also Dhiren Borisa
who is an outstanding poet in Gujarati and also a translator. So we come to our martyr, Professor Siras of Aligarh fame, and into an age of star translators, Gawande, who studied in Columbia and Oxford. Rooms to Sleep In is Professor Siras' epitaph he wrote before his own death. A man, presumably gay, builds a house on top of an incomplete house full of the diktats of a previous owner. A friend, the poet, advises this man not to block out the mountains with windows and walls, but he only wants in his love for solitude rooms to sleep in, which is also the poet's title. He has built for himself, for what remains of his life, a grave as beautiful as Epiphany's. He calls it rooms to sleep in. A fitting epitaph for the poet, written by himself, for himself, before his own untimely death from being socially hounded. Dhiren Borisa of Gujarat and Leicester is a Dalit translated by Akhil Katiyar. Should I mourn a little longer, how he nursed a broken dream? Should I touch his night with words? Should my lament be stronger? How those who carved autumn's last night were exiled by the spring. My town has erupted again in flames. The shrouds again are leaving town. You will have to listen to their names. You will have to keep count. Should I just close the file, jump the folder? Should I ask the Bahujan to lend a shoulder? Your silence was always a warmonger's. Your silence was always a warmonger's. Should I mourn a little longer? We are all guilty of casteism and classism. Bombay trans poet Sripad Sinapar of Dharavi writes a poem of living in Dharavi. He calls it Born and Raised in Bombay. He writes in Bombaya Hindi. At the mouth of the world, I ache for nothing but the feeling of being swallowed. I saw God from the local train passing, no third eye or big hands, just crow wings and burnt skin spread across the sky. They sang, "Come find me at the Jatra, where pioneers meet their deaths, where all brothers descend, where hearts turn soft as entrails, through the city noise of Dharavi. A dirge of birds migrates with the azan, full of holes and yet so heavy. Both the sky and the azan are holy, H-O-L-E-Y, and heavy." In another poem, Threshold, Gadapa in Telugu, Umbartha in Marathi. This trans poet talks of being a slum-dwelling gay poet between man and woman, between home and homelessness in a slum, an educated person between the uneducated poverty, hovering between life and death. He dreams of the river Mithi, a Dharavi Nala being full of water and flamingos. That's what poets are for. I, for my part, have commissioned my autobiography, Man Who Would Be Queen, to be translated into Bangla, to be published next month online in Bangladesh and later in Kolkata, and now also a translation into Hindi. Transgender literature has been encouraged by the Sahitya Academy under Prime Minister Modi. Lakshmi Tripathi has been allowed to form a new akhada
of transgenders for the first time in 300 years at the Kumbh Mela. Her autobiography, Me Lakshmi, Me Hijra, has been translated by Professor Raj Rawat Pune into English. There are a plethora of gay voices, Dalit voices. Being gay and Dalit in India is like being a gay black Jew in America. In spite of the legalization of gay sex, the Dalit voices of gay men and women are still diffident, understandably. But Raj Ram has already shown the way in his novel The Boyfriend, how to humorously show the class conflict in gay sex between Dalit man and bourgeois man. Each man kills the thing he loves. So hopefully these new Dalit voices will gradually gather strength. Among lesbian voices, Jamila Nishat of Hyderabad first wrote a lesbian poem in Urdu called Henry and June. She's talking about the love triangle between my teacher Anais Nin and her lover, the novelist Henry Miller, and his wife June Miller. My teacher slept with both the husband and the wife. This book of my translations of Jamila was published by Sahitya Academy, and I'll read Jamila's poem if you don't mind, both in Urdu and my English translation. If you will indulge me. If you don't have time, I will listen. Okay. हेनरी का सफेद खून अनीस की डायरी से फेर कर मेरी आंखों में टपक पड़ा. जून की चूत पर उभरती मर्दानगी जहन के किवाड़ खोले मुकम्मल आदमी बन खड़ी रही. हेनरी और जून डायरी के औराकों में रक्सान हो गए. मैं औराक पीने लगी, रगों में सांस बजने लगे, मेरी कोख दुखने लगी. बेतुल खला में बैठी अल्फाज का लहू टपकती रही. अल्फाज की सफेदी ड्रेनेज के अंधेरों में खो गई. Henry and June, Anasnes Henry and June. Henry's white blood slipped Anas's diary pages and dripped into my eyes. June's cunt with his little penis opened the doors of the mind to reveal a perfect androgyne. Henry and June, dancing leaves of the diary. I drink leaves and words turn music in my bloodstream. My womb hurts, in the toilet drips the pure blood of words, the whiteness of words becoming lost in the dark dream. Whitman writes in the last verse of the Song of Myself, I bequeath myself to the dirt that grows from the grass I love. If you want me again, look for me under the shoes of your feet. If you want me again, look for me under the shoes of your feet. I should end where I actually should have begun. The graphic representation of what I'm doing in poetry is the figure of the hourglass, the figure of 8. The figure of 8, when it is on its side, becomes the figure of infinity. I approach love poetry at the narrowest point, which is the point of sex. But the hourglass opens out and becomes our common humanity, our common sexuality, which could be heterosexual, which could be homosexual, which could be bisexual, which could be asexual, which could be transsexual. And it goes up and it branches out into spirituality, which is also our common heritage. If everything is soul, then the body is also in the soul. If everything is soul, then the body is also in the soul. We begin with sex and our sexual identity as gay poets, but we go into love. Or to put it very simply, we have sex because we want love. Our guest of honor at the inaugural session
Devika Devendra S. Mangalamukhi ji is here. I request her to kindly join us on the stage. Let us all thank first Professor Hushan Merchant for his outstandingly brilliant inaugural address, which in a brief time, in some minutes, he referred to the world literature, right from Whitman, Lorca to the young poet living in Dharali. The entire galaxy of poets he referred to. Thank you, sir. Thanks for your brilliant inaugural address. Now I request our guest of honor, Devika ji, to share her views. Devika ji is a noted writer, Kathak artist, transgender and women rights activist. She is the state executive member of Uttar Pradesh Transgender Welfare Board. Currently, she is working on transgender community artists in the Mughal era. She is associated with the organizers of various festivals, including Taj Mahotsav, Rath Yatra Mahotsav, and Khajuraho Nritya Samaroh. She is also a visiting expert for transgender community rights in Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Missouri, and gender sensitization expert in Rajasthan Police Academy, Jaipur. Welcome, Devika. Good afternoon to all of you. It's a privilege to be here today with such a beautiful conference which is dedicated to the entire LGBTQIA+ community. And as the anchor sir has already informed about me, I am Devika Devendra Mangalamukhi, India's first transgender woman who have received the National Award from Government of India into Indian Classical Master. I am a Kathak practitioner. I belong to the Gharana, which is called Lucknow Gharana of Kathak. I am following the tradition of Acharya Lachu Maharaj, who has composed a beautiful legend movies, which is called Mughal Azam, Pakiza, and Ugrav Chal. So I belong to the school of Kathak, which is Gharana called Lucknow Gharana. And being a Kathak practitioner, the art and literature, dance and literature is very coherent to each other. So I'm highly delighted that today I'm here and I'm getting opportunity to speak with such a beautiful audience. They are going to listen to me for now, and I'm highly thankful to the madam who sitting here to synchronize this section. I represent the most marginalized communities of India, which is called transgenders. Transgenders, you people is already aware that let me talk in Hindi, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा अंग्रेज नहीं बनती हूँ, अपने देश में हूँ और हिंदी में ही बातें करना पसंद करूँगी। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ ये सोच के कि समाज का सबसे कमजोर तबका, जिसे हम लोग ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, कभी किसी ने कुछ बयान नहीं करा, कभी किसी ने इसके बारे में कुछ खास हिम्मत नहीं जुटाई कुछ करने की, पर आज मैं ये गर्व से कहना चाहती हूँ, ये दूसरी बार रास्ता हो रहा है मेरा यहाँ पे, और दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू द एंटायर साहित्य अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि समाज का सबसे कमजोर तबका जो आपको ताली बजा के इंटरटेन करता है, वो आज यहाँ से अपनी पोएट्रीज, अपने निबंध, अपनी कहानियां और कविताओं से आनंदित करेंगे। तो हम सोचते हैं कि दौर बदल रहा है और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम एक गैप को भी खत्म कर देंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट है मैं इससे ज्यादा ताल्लुक नहीं रखती हूँ कि स्पेशली सेशन फॉर द LGBTQIA+ कम्युनिटी।
क्यों हम इस समाज का हिस्सा नहीं है तो हमें क्या जरूरत है अलग से LGBTQI सेशन करने का। हमें तो एक इंक्लूसिव सेशन करना है ना, जहाँ पे सारे ऑथर्स एक साथ आए, जहाँ पे सारे राइटर्स एक साथ हो, ऑथर्स एक साथ हो और हम सब लोग एक साथ हो। तो जिस ट्रांसजेंडर समुदाय से मैं आती हूँ, बहुत टूटा हुआ समुदाय है मेरा, बड़ा डाइवर्स है। अभी तक लोगों को इस समुदाय के बारे में खासा मालूमात भी नहीं है कि होता क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि ट्रांसजेंडर का मतलब होता है सड़कों पे तालियां बजा के या फिर आपके घर में नाच गाना करके आपको इंटरटेन करने वाले लोग। बट अकॉर्डिंग टू द नालसा जजमेंट और ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 के तहत ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म उनके वर्तमान लिंग से मैच नहीं खाता है। दे बॉर्न इन अ डिफरेंट बॉडी और उसके बाद वो चिकित्सीय सलाह का सहारा लेके, हार्मोन थेरेपीज का सहारा लेके अपना मनचाहा लिंग पाते हैं। वो लोग ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आते हैं, जिनमें ट्रांसजेंडर पुरुष, मेरी जैसी कुछ ट्रांसजेंडर महिलाएं और हमारी सोशियो कल्चरल जो कम्युनिटी है, जैसे हम उत्तर भारत में किन्नर बोलते हैं, दक्षिण भारत में हम अरावलीज बोलते हैं, महाराष्ट्र में हम जोगतास बोलते हैं और कई जगह पे उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम पुकारते हैं। तो ऐसे ही समुदाय का आज मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और आज यहाँ पे कुछ ऐसी बात मैं बताने जा रही हूँ, रूबरू करने जा रही हूँ कि शुरू से ही मुझे साहित्य का बड़ा टेस्ट रहा। लिटरेचर इज ऑलवेज इन माय इनर सोल। मैं कुछ ना कुछ खास फैज अहमद फैज साहब को मैं बहुत ज्यादा पसंद करती रही, उनकी पोइट्रीज को मैं बड़ा प्यार करती रही और खासकर अगर हम ख्वाजा सहराज की बात करते हैं, पहली चीज तो हम अब के नहीं है, वी आर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर हम मुगल दरबार की बात करते हैं या हम शेरशाह सूरी के दरबार की बात करते हैं या हम तुगलक के जमाने की बात करते हैं, ख्वाजा सहराज, द कम्युनिटी ऑफ द ट्रांसजेंडर्स आर ऑलवेज हैव अ रिकॉग्नाइजेशन फेस इनटू द एंटायर इन दिस द मुगल एराज और विच इज कॉल्ड कि जो भी उस जमाने में रूलर्स हुआ करते थे। और अगर हम हिंदू राजाओं की बात करते हैं तो उनके दरबार में भी शुरू से ही ट्रांस कम्युनिटीज का बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव रहा है। तो आज मैं बात करना चाहूंगी अपनी खास सेशन में कि आई वुड लाइक टू टॉक जो मुगल दरबार की हम बात करते हैं। एक फ्रेजेस आया तो जो कि अकबरी का, दो ख्वाजा सहराज हुआ करती थी उस दौरान में, एक का नाम हुआ करता था मोहद्दत बाई और एक का नाम हुआ करता था फिरदौस बाई। दोनों ही ख्वाजा सहराज यानी ट्रांसजेंडर वुमेन्स का काम था, वो मुगल कोर्ट में डांस किया करती थी। They are very good beauty, they are so pleasant beautician as well। तो वो रानियों को ये भी सिखाती थी how to groom yourself। और सबसे बड़ा काम वो करती थी, वो लिटरेचर लिखती थी जो पर्शियन भाषा में होता था और उस पर्शियन भाषा का लिटरेचर लिख के वो वहाँ के कोर्ट डांसर्स को देती थी और हम फिर वो जो राजा है, वो जो नवाब है, वो जो मुगल एम्पायर का व्यक्ति है, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको उसकी खुशामदगी में उसको अच्छा करने के लिए वो रिसाइटेशन किया जाता था। तो ख्वाजा सहराज सिर्फ एंटरटेन नहीं करती थी डांस करके, ख्वाजा सहराज साहित्य में, लिटरेचर में अपने फ्रेजेस को एक राजा के सामने रखती थी और वरोज जब राजा को वो खूब खास पसंद आती थी तो उनको नायाब तोहफे भी अदा फरमाए जाते थे। तो एक बहुत खूबसूरत पर्शियन भाषा की एक नज्म है जो मैं आप लोगों के सामने आज पढ़ना चाहूंगी। ये मैंने तुझो के बाबरी के फ्रेजेस में से ली है और अकबरनामा में भी इसका जिक्र आता है। बहुत सारे लोग जो उर्दू लिटरेचर से होंगे दे आर मोर फेमिलियर टू अकबरनामा और तुझो के बाबरी एंड अकबरी टुगेदर। तो उसी का एक पर्शियन भाषा का जो शेर है मैं वो पढ़ना चाहूंगी और I'll recite later on उसका मैं मीनिंग भी I'll recite in the English as well। नमन बेहुदा गिरदे कूचा, नमन बेहुदा गिरदे कूचा ओ बाजार नी करदम। नमन बेहुदा गिरदे कूचा ओ बाजार मी करदम। मजाक ए इश्क, मजाक ए इश्क दारम पाए दीदार। मजाक ए इश्क
दारम पाए दीदार नहीं करता। तो ये इस खास जो पर्शियन भाषा का जो शेर है, जिसे फारश में, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद यही कन्फ्लिक्ट है कि जब मुगल इंडिया में आए थे तो वो कौन सी जबान अपने साथ लेके आए थे। स्टिल वी हैव अ टैबू इन द सोसाइटी के आर दे स्पीक उर्दू और दे स्पीक इंग्लिश or they speak Armenian language or they speak some Faris. So that my research जो मैंने अभी तक काम किया है इस चीज पे, तो जहाँ तक मैं इस चीज से ताल्लुक पाती हूँ और जहाँ तक मैं सोचती हूँ इस बारे में, they speak Faris। और जितना भी लिटरेचर मुगल दरबार में लिखा गया, जो टोडरमल जी जो जमाने में थी, बीरबल जी ने जितना लिखा, उसको ट्रांसलेट किया गया बाद में उर्दू में, और आज हम उस लिटरेचर को शायद ढंग से नहीं पाते हैं आप लोगों के बीच में, हमें उतना अच्छा लिटरेचर नहीं मिल पाता है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ। हमारे यहाँ लखनऊ में इमाम बाड़ा है, एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है, माय रिसर्च आर गोइंग ऑन, वहां से कुछ भी अच्छे फ्रेजेस मुझे मिलते हैं, कुछ भी चीजें मिलती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस तरीके से जुड़ेंगे, कुछ एक नए उम्दा और सादगी के साथ हम उन चीजों को कन्फ्लिक्ट करना चाहेंगे। और मैं बहुत उत्साहित हूँ आज इस LGBTI खास इस सेक्शन में आके, और मैं आपसे भी थोड़ा रूबरू होना चाहूंगी। और मोहतरम बैठी हुई है पिंक साड़ी में, बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाअल्लाह। मैं भी कुछ ऐसे ही पिंक पहनी हुई हूँ, तो मैचिंग हो गई हमारी। तो इन मैम से भी जरा गुफ्तगू कर लेते हैं, उनके मन में she has something to be asked। और एक सबसे खूबसूरत बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, सबसे पहले तो हम भारत में रहते हैं, ये मुल्क है जहाँ पे हम हर धर्म का, हर दीन का, हर एक इंसान अमन और चैन के साथ रहता है। ये वो देश है जो पूरे विश्व में तीसरा देश बना जिसने वर्ल्ड के अंदर ट्रांसजेंडर राइट्स को एज लीगल जेंडर बताया। और हम वी आर सो प्राउड, मैं बहुत गर्व करती हूँ इस बात पे कि भारत पूरे विश्व का ऐसा तीसरा देश बना 2014 में वी ट्रांसजेंडर्स को एक लीगल जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। तो क्या हम अपने मुल्क के लिए तालियां नहीं बजाना चाहेंगे? और हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति जो इस भारत में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी है गुलिस्तां हमारा। तो हमारे हिंदुस्तान के बारे में जो 3 चीजें हर एक व्यक्ति को मालूमात होना चाहिए, वो है सबसे पहले मेरा मुल्क, जो आपका भी मुल्क है, जो हम सबका मुल्क है। उसके बाद आता है हमारा भारतीय संविधान, जो आपका संविधान है, जो मेरा संविधान है और हमारा संविधान है। और सबसे तीसरी खास चीज है हमारी भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका, जो आपकी न्यायपालिका है, जो मेरी न्यायपालिका है, जो हम सबकी न्यायपालिका है, जिसने हमें ये अधिकार दिया कि आज ये साड़ी पहन के और बल खा के मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर नालसा जजमेंट ना आता और ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट ना आता, तो मेरे जैसी कई देविकाएं आपको लाल बत्ती पे खड़े होके ताली बजा के इंटरटेन कर रही होती। तो ये मेरा भारत है, हमारे सपनों का भारत। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बड़े भाई साहब, क्योंकि बीजेपी से ताल्लुक रखती हूँ मैं, और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की प्रमुख सदस्य एवं सलाहकार हूँ। तो ये संभव सिर्फ हमारी सरकार में। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बड़े भैया श्री जी कृष्णा रेड्डी साहब के लिए, जिन्होंने ये परिकल्पना सजाई। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे सेक्रेटरी साहब के श्रीनिवासन जी की पूरी टीम के लिए, क्योंकि एक चीज मैं कहना चाहूंगी, माफ करिएगा शायद ये गलत होगा, पर कहीं कहीं हम थोड़ा सा अपने आप को रीजन में बांट देते हैं। वी हैव कि तुम उत्तरी भारत से आते हो, हम दक्षिण भारत से आते हैं, पर मैं कहना चाहूंगी कि दक्षिण भारतीय लोगों में ये वो दम है जो टंकी की चोट पे हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक बार साउथ इंडियन कम्युनिटी के लिए जोरदार तालियां, बिकॉज जो भी परिकल्पनाएं हो रही हैं, मैंने कभी ऐसा फेस्टिवल नहीं देखा, ये मेरी जिंदगी का दूसरा फेस्टिवल है। एक हमने शिमला में किया, आप लोगों को याद होगा, और ये दूसरा फेस्टिवल है। क्या ऐसी हिम्मत हम और नहीं निकाल सकते हैं? क्या ऐसी हिम्मत, इतनी सारी एकेडमीज बनी है, उर्दू एकेडमी,
फारस अकेडमी, उर्दू अकेडमी, सिंधी अकेडमी, ब्रज भाषा अकेडमी, हिंदी अकेडमी, वो क्यों हम ख्वाजा सहराज के लिए हम ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीमिंग में नहीं लाना चाहते हैं? क्यों बार बार केंद्रीय साहित्य अकेडमी को ये प्रयास करना पड़ता है समाज का विरोध झेलते हुए कि ये जो वर्ग है इसको हमें मंच देना है, हमें इनकी बात को सुनना और समझना है। मैं आप जो भी लोग यहाँ पे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ, आप जितने भी लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली स्पीक एंड रेज द वॉइस फॉर द एंटायर कम्युनिटी ऑफ द LGBTQIA+, कि हमें भी एक अवसर दीजिए, हम लोग भी चाहते हैं उस मुकाम पे खड़े होके आप लोगों से रास्ता करना। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे बाद में कुछ फ्रेजेस के बारे में तो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो एक दो खास पोइट्रीज हैं, और फैज साहब की तन्हाई को तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, तो तन्हाई पे कुछ मैं पढ़ना चाहूंगी। और अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन फ्रॉम द ऑडियंस, बिकॉज मैं एक वक्ता होने के साथ साथ एक इतिहास, एक लेखिका होने के साथ साथ, एक ऑथर होने के साथ साथ एक ट्रांसजेंडर एवं महिला अधिकार समाज सेवी हूँ। तो आज यहाँ पे जो भी आपके मिथ्स बने हैं साहित्य के परिप्रेक्ष्य से, मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं उनको शेयर करूँ, एंड इट विल बी ऑनर इफ यू कैन आस्क समथिंग फ्रॉम टू मी एंड विल गिव आंसर टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Devika ji, for your address. We all wish you best for your research and future. Now I invite our chief guest, C.K. Gariyali ji, who is a noted administrator, writer, scholar, social activist, and gender activist. She is founder of several organizations like South Zone Cultural Center. She is associated with several literary and cultural organizations as well. Her major publications include The Transgender Achievers and Survivors of India, Inching Forward, Political Empowerment of Women in Commonwealth Countries, and Women's Own Self-Help Movement of Tamil Nadu. Please welcome Gariyali ji. I'm extremely grateful to Mr. Rao and the Sahitya Academy for making it possible for me to come here, because I live in Tamil Nadu and I have never come this far and never been able to be the mainstream of the things. And I'm very happy because I believe we have to uphold the dignity of human dignity of people, especially our members of our LGBTQ plus community. I am fully aware of the suffering that LGBTQ plus community has undergone right from 1850, when the British colonial officials started expressing outrage at the community. After British Raj in 1957, they brought an Anti-Buggery Act of 1533, which was an English act that was bought and imposed on India and making on the people with different sexual orientation. Now, before the British, as our friend here told about Mughal period, those born with different sexual orientation were important and powerful figures and were in charge of collecting taxes, commanding armies, and held administrative positions. This was another reason the British wanted to marginalize them and they wanted to impoverish them. And as if it was not enough, in 1871, colonial government passed another law that victimized the LGBT community members with the explicit aim of finishing them and exterminating them. The Section 377 of Indian Penal Code was introduced to criminalize them as a group, which had serious repercussions for the entire community. They were declared ex-criminal tribes, had to register themselves in the police station and come for the report call every day. They were not allowed to hold jobs, and they were prohibited from wearing women's attire,
and they were prohibited from performing in public places. But that was their livelihood. And when that is taken out, how will people survive? The idea was to slowly exterminate them, and these difficult circumstances, they evaded the police. They were constantly on the move. They were hiding, and somehow they managed their cultural traditions and code of language alive, secretly alive. Unfortunately, after the independence also, we continued the old British laws for next 70 years. And as you know, it was only 1914 that 2014 that we were able to get a judgment decriminalizing our community. Now, I have been very close with LGBT community from my childhood because one of my aunts who was a professor of education. Way back in 60s, she had courage to go to Bombay and change her sex and become a man. And she came back and fought for her job and got back her job. She was principal of the Teachers Training College in Kashmir, and she went back and fought with authorities, and then she got married also to her long-time friend from the same college. Now the second was I had a friend, my classmate, who was going to school. We went to school together, holding hands from the second standard onwards, going to same school. And when she was 16, her family got her married, so young. We wanted to study, both of us, but they said, "Nahi, bahut acha ladka mil gaya," so they got her married. And you know, the day she went to, today she got married, tomorrow we are coming, she'll come for fera dalne ke liye, no, next day you come. And her dead body came. Even we did not know that she had a different sexual orientation. And when her husband found, he told her, "I'll send you back tomorrow morning." And that she killed herself in the night, finding some rat poison and all that. So that left a very deep impact on my heart because I was also 16 and we were hoping to see her next day. So these are the things which were very sad. Then I got, because I was in government, I was looking after health department. And it was in Tamil Nadu that in 1986, our Dr. Suniti Solomon, she found the first 6 cases of AIDS. The AIDS cases were found in Tamil Nadu. And then I was in charge of making arrangements for setting up the infrastructure, setting up the NGO, setting up the medical. So I again came to know a lot of people who were gay, who were different, who were having problems, and we had to support them. Now, I want to share one more incident which has happened to me personally. I was working as chairman of Women's Development Corporation. At that time, 2 women came to see me. 2 women came to see me. But they had become women from a man. They were earlier brought up as boys, and they had undergone sexual surgery, and they become girls. Their company where they were working, they dismissed them from the job. So they came to tell me what we will do. I said, I'll go back to the company and talk to them, and we try to get back their jobs. But what they said, we don't want to go to that company because they want us to dress up as men and come. With great difficulty, we have become women. We have spent all our money. We have done so much of physical torture. Now, how we can wear the male clothes again? We will never wear. Then I thought, okay, I had some authority as a chairman. I said, you work in my office. I gave small jobs of office assistant to 2 of them. It was only a casual job. I thought it was 2001. Imagine 2001, much before judgment and anything. I thought, okay, let us get them in. And after some time, I told government to make them permanent after 1 or 2 years. And then we slowly changed the situation. Unfortunately, tsunami happened and I had to go on tsunami duty. And we had a very bad general manager. He tortured them so much, I didn't even know. Day and night he was torturing, they resigned and went away. They didn't even tell me because I was in another district doing tsunami work. So when I came back, I looked for them. I thought, let's see how they're doing, how's their work. And I came to know they have been thrown out because they were tortured so much, they self-resigned. So these people, all these things have been always in my mind and it's upset me quite a lot. So finally, I decided, just let me be writing this book which I have written, Transgender Survivors and Achievers in India. Because we have so many achievers also, like here is Cinema. Most of you are great achievers, and I want to inspire more people so they can be achievers also. So I have taken 14 case studies and they are there in the book.
Those who are interested can take a copy of the book. Books are here. And now I want to show you some images from the book so that you will get some idea of what we are talking about. See another bit of it. Can you remove the chair? I'll quickly run through because I'm not talking too much. I thought images would be better. First image. Now this is images from Bhopal. It's called Pujaria Festival. It's called so, you know this, I told you the British banned everything good which was happening. So, this is a Pujaria festival which is so ancient from the time of Raja Bhoj. You know Raja Bhoj? That time there was a अकाल पड़ गया देश में. इतना बड़ा अकाल पड़ा कि लोगों ने कहा कि आप जो है इन लोगों को बुला के पूजा करवाओ और बुजरिया रखेंगे. Bujaria, you know, that is they will grow the grapes in a pot and then they will take a procession and go to Shiva temple pray. तो बारिश हो जाएगी. तो तब से ये चल रहा है राजा भोज के जमाने से. तो अंग्रेजों ने बैन कर दिया. But the Nawab of Bhopal, he took a special dispensation, he negotiated with the British and then he continued the festival. That festival continued even during COVID. These people, this is during the COVID, they still took the festival and it is still going on. These are the women. Next video. Now this you have to see, very important thing. These are the Abyssinian guards. They are the guards of the grave of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad in Medina has his maqbara. These are guarding and these are guarding from 12th century. 12th century से ये लोग गार्ड कर रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे नहीं हैं, इनको कोई लालच नहीं है. उन दिनों बहुत खजाना होता था, प्रॉफिट के रूप में खजाना रखते थे. तो इन लोगों को ही 12वीं शताब्दी से ये गार्ड्स हैं और इनके पास चाबी रहती है मकबरे की. और कोई वीआईपी आते हैं तो यही लोग दिखाते हैं वीआईपी को. तो इतने इम्पोर्टेंट है ये लोग. लेकिन अभी देखिए अभी इस्लाम में भी काफी वो आ गया है प्यूरिटिज्म. अब वो लोग नहीं अपॉइंट करते. ये लोग अब लास्ट 4 गार्ड्स बचे. These are the last. These are the 2. Now only 4 are left. And after they die, Medina. Okay, next. Now this is called Khichdo ki Khanka. This is in Qutub Minar Mehroli. As a child, I have gone there because we had a transgender who was our neighbor. So he didn't have naturally children of his own, so he used to take us for outings and on Qutub Minar le jaungi, idhar le jaungi, Maqbare pe chalo. They used to have a festival once in a year, and they will distribute food and all. Uske daan dharam karte the, charity karte the, and so these are all important transgender but spiritual leaders. So 41 groups are there, 41 groups of spiritual transgender. So there was this tradition. They had spiritual space, they had every space. Now we say that they should not go to Kumbh Mela, but they were spiritual leaders. So this I want to show you next video. This is a place I was brought up in Purani Delhi. It's called Sitaram Bazaar. The Sitaram Bazaar has got the oldest community of transgender from the time of Mughals. So I just take a picture of one of the ladies. We were brought up with these people and we enjoyed following them. जब वो ढोल बजा के चलते थे, हम बच्चे होते थे तो हम पीछे पीछे चलते थे. भाई इस घर में बच्चा पैदा हुआ, इस घर में शादी हो रही है. अच्छा अगला बेटा. ये हमारा एक फेस्टिवल होता है तमिलनाडु में, भूवागम में. It's called Festival of Transgender. उस दिन क्या होता है, पूरे देश से ट्रांसजेंडर वहाँ जमा होते हैं क्योंकि हर एक के मन में शादी करने की इच्छा होती है, लेकिन वो लोग शादी नहीं अलाउ करते थे उनको. तो ये लोग मंदिर बैठ के भगवान के साथ शादी करते हैं. तो ये जो है दानवर, ये जो है actually it's story of Putwanda. He was Arjuna's son. He was Arjuna's son and he was given as a human sacrifice during Mahabharata. But at that time he took a promise from Krishna that I will be kept alive to see the war. And before war, before I give sacrifice, I also want to get married.
So what happened? Nobody wanted to marry him because he's going to die next day. They will become widows. Then Vishnu took the form of Bolni and married Udadwar. That is so that is why all transgender people can marry him. And next day he's killed. They become widows. There's crying. There's shouting. Next thing comes. सबने ताली पहनी है, अपना मंगलसूत्र पहना है, अगले दिन वो फेंक देती है मंगलसूत्र, फिर रोना धोना होता है. तो उनका एक इट्स लाइक ए कमिंग ऑफ एज. तो उन्हें भी शादी करनी भगवान के साथ. ये हमारा बहुचरी माता का टेम्पल है. दिस इज द गॉडेस which many transgender consider their goddess. It's like Durga. Only thing is instead of शेर her वाहन is a Durga. तो उसको मुर्गी देवी भी कहते हैं कभी. तो ये जो है बहुत बढ़िया टेम्पल गुजरात में है. तो ये यहाँ पे लोग जाते हैं और पूजा करते हैं एंड वहाँ पे जेंडर चेंज करने का भी प्रबंध रहता है. This is our Tamil Nadu. Tamil Nadu में we have Renuka Devi temple and there for 10 days these ordinary people who are actually ordinary transgender or ordinary gay men or anybody. So they are all coolies and they are workers and they are laborers and all. But for 10 days they become gods. So they are done all this makeup and all. For 10 days the देवी देवता बन जाते हैं. Everybody जाके उनको worship करता है, उनके आशीर्वाद लेता है. 10 दिन के बाद फिर वो ordinary people बन जाते हैं. So this is another thing. We have festival in Kadalur in Tamil Nadu. ये आपने लक्ष्मी की बात करी थी, सर आपने करी थी. तो ये वो पूछ रही थी अखाड़े में. अच्छा अखाड़ा जो है उन्होंने महंतों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने किया, आईएएस ऑफिसर ने किया. उसने कहा मैं इनको वही फैसिलिटी दूंगा जो सारे अखाड़े को दूंगा. महंत जी ने अभी तक नहीं किया है. ये लास्ट था इलाहाबाद था. चलिए तो सबसे सुंदर इनका था. सबसे ज्यादा भीड़ जो है ट्रांसजेंडर अखाड़े में थी. सबसे ज्यादा लोग वहां पे आए आशीर्वाद देने के लिए. बहुत सुंदर ये हमारी है नर्तकी नटराज. पहली डांस को मैं बचपन से जानती हूँ. जब मैं 15 साल की थी तो इसने कहा नाट्यांजलि फेस्टिवल में डांस करने के लिए इसकी एप्लीकेशन आई और हमारी समझ में नहीं आया उसको क्या बोले कि लड़का नाच रहा है लड़की नाच रही है. हम लोग भी कंफ्यूज थे. कितने साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं. आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज चिदम्बरम टेम्पल में फेस्टिवल. पर हमने कहा कि वी विल गिव अवसर देंगे. पहली बार हमने उसको अवसर दिया चिदम्बरम में डांस करने का. तब से मैं इसको जानती हूँ. फिर जब प्रतिमा पाटिल जी आई थी तमिलनाडु प्रेसिडेंट बनके तो मैंने इनसे कहा कि तुम डांस करो मेरे सामने. तो उन्होंने किया और हमने प्रेसिडेंट को वो उनके बारे में बताया कि ये कौन है क्या है. अच्छा जब मैं डांस सीखने के लिए अपने गुरु के पास गई तो गुरु ने एक्सेप्ट नहीं किया. तंजावर में गुरु थे तो गुरु के घर के बाहर 1 साल बैठी है. 1 साल घर के बाहर बैठी रही कि गई नहीं वापस घर कि मैं सीखूंगी. और कैसे पता लगा किससे सीखना है. वैजयंती माला को देखती थी टीवी पे तो वैजयंती माला के गुरु से सीखना है. ये नहीं पता था कौन है. तो उनको अवार्ड मिला. पता लगा इसको तंजावर में रहते वहां चली गई और वहां बैठ गई घर के बाहर. जब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया नहीं वापस गई. फिर सीखा. फिर उन्होंने इसको नर्तकी नटराज का खिताब दिया. गुरु ने ही नाम रखा है नर्तकी नटराज. ये हमारी पहली पुलिस ऑफिसर है जो ट्रांसजेंडर के रूप में पुलिस ऑफिसर और बहुत स्ट्रगल की. इनको कहा जी आप इसमें फेल हो गई, आपका 1 नंबर से आप फिजिकल में फेल हो गई. फिर हमारे वो जस्टिस राधा कृष्णन जस्टिस कॉल थे. उन्होंने हाई कोर्ट पर जाके उनकी मदद की. बोले कि एक तरह से इन्होंने इतनी सफरिंग लिया वो 1 नंबर के लिए आप उनको यानी फिजिकली अनफिट है तो उन्होंने इनको अलाउ किया. तो पहली पुलिस ऑफिसर हमारे तमिलनाडु में बनी. ये हमारी पहली एडवोकेट बनी है. यानी कि एडवोकेट तो हो सकता है छुपे हुए बहुत से ये लोग एडवोकेट हो गए लेकिन ओपनली कह के कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मुझे बार में एज ए ट्रांसजेंडर रजिस्टर होना है. उसके लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल की. 7 साल लगे बाद में रजिस्ट्रेशन मिलने. 7 years वेटेड फॉर रजिस्ट्रेशन. ये हमारी पहली इंजीनियर है. इन्होंने भी एज ए ट्रांसजेंडर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला. उसके लिए भी हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा. कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी. चलिए नेक्स्ट. ये ऐसी इतनी बुरी हालत हुई है. कई बार इनके साथ रेप हुआ है. पता नहीं क्या क्या हुआ. 5 महीने जाके पास्टर बन गई है.
Now she's a pastor. She's a Christian pastor. She's going to various churches. She's preaching people. She's helping people. इस तरह ये बहुत ही बढ़िया है. ये this is a second AIDS patient in India. Noori Amma. Noori Amma did not change her operation वगैरह नहीं किया क्योंकि उस जमाने में इतना नहीं करते थे. लेकिन अभी भी सर्वाइव कर रही है. Second AIDS patient in country surviving till now. And she is looking after 200 to 300 AIDS orphans. जिनके माता पिता दोनों मर गए थे. अब की जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम उन्होंने सबको बड़ा किया और जो पॉजिटिव बच्चों की शादियां भी कर दी. लड़की भी पॉजिटिव है, लड़का भी पॉजिटिव, शादी भी कर दी. तो बहुत अच्छा काम किया. 26 देशों में जा चुकी हैं, 26 जगह भाषण दे चुकी हैं. वेरी अमेजिंग पर्सन एंड वी ऑल लव हर. नेक्स्ट बेटा. Shweta runs an agency. I'm sure many of you here are running agencies. So she runs an NGO. It's called Born to Win. Every year she does a fashion show. Then she makes a calendar for distinguished people. She gives awards to people who have achieved something. Last year I went for an award function. There was a pilot from Kerala. एक ट्रांसजेंडर पायलट भी बन गई है. कुछ है. तो श्वेता बहुत काम करती है और उसकी कहानी हमारी किताब में है. ये भी और का भी एक और संस्था चलाती है. और इन लोगों ने एड्स पे जब कोई भी वॉलंटियर नहीं आ रहा था, सारे हमारे ट्रांसजेंडर में सड़कों पे खड़ा होकर लोगों के दवाइयां पहुंचाई है. सरकार के वॉलंटियर बने हैं क्योंकि दे हैव स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग बॉडी एंड दे डिडंट केयर. दे सेड हम लोग करेंगे. तो ये सारे लोग जो हैं एड्स के दिनों में इन्होंने सड़क पे खड़े होकर काम किया. आगे बढ़ो. ये हमारी एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो किताब लिखी गई इस लड़की की वजह से, क्योंकि मेरी बेटी की फिल्मों में काम करती है. तो ये उस टाइम ये असिस्टेंट होते हैं, मेकअप असिस्टेंट वगैरह कुछ इस तरह का काम कर रही थी. तो मेरी बेटी ने उसकी कहानी बताई कि इसके साथ क्या क्या हुआ है. बचपन में 6 साल की उम्र में बाप ने किसी यानी कि बदवा मजदूर की तरह कहीं रखवा दिया. वो लोग मारते थे, पीटते थे. फिर वो बहुत अत्याचार हुए, गैंग रेप हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ. मतलब तो तब से मुझे लगा कि इन लोगों की कहानियां लिखनी चाहिए. तभी मैंने 14 लोगों की कहानियां इस किताब में लिखी. तो अभी ये अच्छी एकदम बन गई है. कमल ये रजनीकांत के साथ इसकी फोटो है. चलिए ये तो ब्यूटी क्वीन बन गई है. इसलिए तो कई ट्रांस जो इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है. तो नमिता ये हम कह रहे हैं कि उनसे भी कई चीजें कर सकते हैं लोग, जब वो अपना डिटरमिन कर लेते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं. ये भी एक एनजीओ चलाती है and she helps lot of people. She helps gay also. तो उसका नाम है सुधा रेड्डी. उनको PhD की उपाधि भी मिली है. वेरी गुड सोशल ये जस्टिस जिन्होंने जजमेंट दी थी 2014 में. तो वे बहुत आभारी हैं उनके. ये जस्टिस कौल है जिन्होंने पुलिस ऑफिसर के लिए जजमेंट दी थी. ये हमारी शबनम मौसी है, मध्य प्रदेश में MP है. वो है जो मेयर बन गई है मधु किन्नर रायगढ़ में. चलिए अब जो है हम लोग the whole emphasis should be एक. मैं अब ये कहती हूँ कि करना क्या है, हमें आगे क्या करना है. इसके लिए मैं 2 शब्द बोलूँगी. मुझे पता है टाइम. तो एट द एंड आई विल से कि अभी भी हमें बहुत लंबा रास्ता नापना है. रोड इज वेरी लॉन्ग इन स्पाइट ऑफ जजमेंट्स एज समबडी हैज आल्सो सेड सॉर्ट ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आर स्टिल. अब देखिए आप ट्रांसजेंडर बोर्ड में हैं, लेकिन कितने स्टेट में भी बोर्ड बने हैं. सब स्टेट्स में बोर्ड नहीं बने हैं. तमिलनाडु में हमने 2010 में बोर्ड बना के थे क्योंकि जयललिता वहाँ पे थी और जयललिता का दिल लोगों के साथ था. तो उन्होंने 210 में बना दिया था. 210 में ही एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन हो सकती थी, कई चीजें करती थी. लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि बोर्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब काफी एक्टिव है. अभी अब तक की नटराज की इसको सलाहकार हो गई है, लेकिन बहुत कम जगहों पे अभी बोर्ड है और कहीं कहीं बने हैं नाम के वास्ते हैं. आप भी बताइए, आपको अच्छे से पता होगा. तो दैट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली. तो ये मैं बताना चाहती हूँ. दूसरी बात ये है जो एनजीओ जितनी भी हैं ज्यादातर ट्रांसजेंडर खुद चला रहे हैं और उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कितना रिसोर्सेज है, बहुत कम है. जो मेन स्ट्रीम एनजीओज हैं दे आर नॉट टेकिंग अप द कॉजेज ऑफ ट्रांसजेंडर टू दैट एक्सटेंट. तो वो अभी जो है वो मेन स्ट्रीम द इश्यूज
Like we help for children, women, we have hundreds of associations. But we have to also, ordinary mainstream associations have to help them. That is what I feel. Now, in our own family, because I run our own NGOs, and I found one thing. I'm on the charity of a bank. तो हमने उस बैंक में ट्रांसजेंडर को लाइवलीहुड लोन देने शुरू करे हैं. उस बैंक का नाम है इक्विटास बैंक. So I am founder trustee of that charity. So we have already given to 300-400 people. It's slow, but we are giving them a livelihood loans, and they have started doing livelihood activities. But what we found, there are some people who are not getting that loan also. Why? Because Reserve Bank has given such difficult KYC guidelines that poorest of the poor don't get anything. ना उनके पास पेपर है, ना उनके पास. अब उनके पेपर बनवाने के बोर्ड वाले कहें कि भाई हाँ ये ट्रांसजेंडर है, ये इसका नाम है, ये इसकी आईडी है, तो वो आईडी कार्ड दे रहे हैं. तो जिनके पास नहीं है, तो हमने अपने से, अपनी एनजीओ से हमने एक छोटा सा फंड क्रिएट किया है, ऐश्वर्या रिवॉल्विंग फंड फॉर ट्रांसजेंडर एंड सिंगल वीमेन एंड अबेंडेड वीमेन. तो उनको हम छोटा सा माइक्रो लोन इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं, और अगर वो 70% पे करते हैं तो बाकी का 30% माफ कर देते हैं. तो इस दौरान उनकी केवाईसी डेवलप कर देते हैं ताकि फिर वो रेगुलर बैंक में चली जाए. तो these are the efforts we are making. At the end, I will say only we want society to be more inclusive, more accepting. Families, first of all, families and schools and employees, they have to change. Families अपने बच्चों को घर में ही नहीं रहने देते, और बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं. क्यों मारते हैं, पीटते हैं, ये मत करो, लड़की के रोड पे मत पहनो. तो जब तक घर वाले भाग जाते हैं, उनको घर का कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलता, प्रॉपर्टी दूसरे भाई का ले लेते हैं, इनको तो कुछ नहीं मिलता. तो they are deprived of everything. So we have to change the attitude of family, schools, educational institution and employees. I'll stop here because we don't have that much time. And this is one of the people, they are making soaps, and this is the bank which is giving loans to transgender. This is one of the, we had an artist here. Somebody said I'm doing theater. But this is one of our theater person. She does it. अब ये महिला जो है ट्रांसजेंडर है, लेकिन उसकी थिएटर कंपनी में 14 लोग हैं, उसमें से 13 नॉर्मल मैन हैं. 13 नॉर्मल मैन को वो काम रोजी जिंदा दे रही है. इसका नाम धनलक्ष्मी. और ये हमारी पहली है, ये हमारी ये हमारी पहली ट्रांसजेंडर है जो एज ट्रांसजेंडर हैज जॉइंड कॉर्पोरेट एंड शी इज वर्किंग एज एचआर डिपार्टमेंट, हेडिंग एचआर ऑफ, पहले इक्विटास बैंक में थी, अब एक और जगह में. ये क्विकली आई विल शो यू द few images from Australia because half the time I live in Australia. वो भी मेरा घर है. अब देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या फर्क है, ये देखिए. एक छोटी सी शहर है, 60,000 पॉपुलेशन, उसमें एक 10 दिन का पूरा ट्रांसजेंडर फेस्टिवल चल रहा था. मैं वहां गई थी 10 दिन, 60,000 पॉपुलेशन. ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में दे रही है बुक ऑफ दिस मैन. द बुक इज कॉल्ड द बॉय इन अ ड्रेस. सो इट्स अ गे राइटर. इसका बुक रिलीज हुआ. I also attended, I also brought the book. Next. ये जो है लाइब्रेरी में बच्चों को कहानी सुना रहे हैं. इसका नाम है फ्रॉक हडसन. तो फ्रॉक हडसन is a storyteller, trans storyteller, who's teaching children that other children could be different. There could be a boy who wants to play with dolls. There's a boy who wants to wear a frock, and that is helping children, small children, to understand their own sexuality and also the sexuality of other children. जब ये बच्चे बड़े होके बुली नहीं करेंगे, तो उस तरह से एजुकेशन दे रहे हैं. तो ये फ्रॉक हडसन है. कहानी बता रहे हैं. तो कितनी अच्छी बात है. हमारे को भी तो ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे ना अपने देश में. और देखो आगे ये कॉन्सर्ट, मेन जो सीबीडी के अंदर मेन पार्क है, वहाँ पे पूरा कॉन्सर्ट हो रहा है. तो पूरी जनता आके देख सकती है. तो पूरी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक में. ये हमारा मारुति ग्रह सिटी का बहुत बड़ा होता है. मारुति का जैसे कि लॉस एंजलिस में होता है, ब्राजील में होता है, सिडनी और मेलबर्न में. हमारा इस साल का मार्केट 2 साल नहीं हुआ कोविड की वजह से. इस साल बहुत जबरदस्त मार्केट रहा. आगे बढ़े मार्केट. नेक्स्ट चलिए आगे. ये देखिए, ये मैं इसके साथ खत्म कर रही हूँ. ये प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खुद चले हम आरती ग्राम इस साल.
और ये कभी किसी देश में हुआ नहीं आज तक। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक हमारे भी पॉलिटिकल बिल ऐसे नहीं बदलेगी तो देश नहीं बदलेगा। ये और आपको पता है 30 देशों में समलिंगी शादी अलाउड है। ऑस्ट्रेलिया में 2017 में हुई, उन्होंने पूरा रेफरेंडम किया, एक एक आदमी का वोट लिया, पूरे देश के हर प्राणी ने वोट दिया, तब जाके वोट पे यस हो गया और उन्होंने ये कर दिया। तो हमारे को भी कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। आई स्टॉप। Thank you, Gayaleji, for your very informative speech. Before the inaugural session ends and our short story reading session begins, Devika ji intends to read out a poem. I welcome. She will take not more than 5 minutes, then immediately we will begin the session for short story readings. समय की नज़ाकत को देखते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, वैसे भी हम लोग लेट चल रहे हैं। जैसे कि रिस्पेक्टेड गरियाली मैम ने बताया, उनका जो द वर्क शी हैज़ डन ब्यूटीफुली एंड कभी कभी सेशंस में हो जाता है ऊपर नीचे टाइमिंग्स। हम भारत में रहते हैं और हमारे यहाँ पंक्चुअलिटी तो हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम ले लिया जाता है। और अच्छी बात है, जब जहाँ अच्छी बात हो रही हो तो अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया जाए तो कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। तो जैसा गरियाली मैडम, आई वुड जस्ट कंक्लूड यू इन वन टॉक। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक बात बोलूंगी। आपने इतना, आई एम सो हैप्पी एंड इट्स प्रिविलेज फॉर मी कि आपने नर्तकी नटराज जी को पहला मौका दिया कि उनको परफॉर्मेंस करने का चांसेस मिला। मैं जिस दौरान जमाने में स्ट्रगल किया करती थी, उस जमाने में मुझे लेटरिन और वॉशरूम्स के अंदर अपना मेकअप करना पड़ता था, लोग मुझे ग्रीन रूम में भी घुसने को नहीं दिया करते थे। तो उस जमाने का स्ट्रगल देखते हुए अब तो बहुत कुछ इंक्लूसिव हो गया है। और एक चीज मैम, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक इंक्लूड और कंक्लूड करना चाहूंगी। हम सभी नॉर्मल हैं, मतलब पुरुष ही नॉर्मल नहीं होते हैं। वी ऑल, एंटायर कम्युनिटी, एंटायर ह्यूमन बीइंग आर नॉर्मल, वी ऑल आर नॉर्मल। बस फर्क इतना सा है, कुछ लोग हमारी सिसजेंडर्स होते हैं और हम लोग ट्रांसजेंडर्स होते हैं। और एक सबसे बड़ा फासला, जिस तरीके से मैम ने ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में बहुत अच्छा बताया, उसी तरीके से हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम ट्रांसजेंडर पुरुष कहते हैं। अभी वो लोग उतना ज्यादा नहीं आ रहे हैं इंक्लूजन में, पर आने वाले समय में मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ट्रांसजेंडर पुरुष भी इस मंच से खड़े होंगे और अपने साहित्य से, अपनी अभिव्यक्ति से, अपनी पार की सोच से हम लोगों को एंटरटेन करेंगे। तो एक फैज अहमद फैज साहब की तन्हाई मेरे दिल को बड़ी करीब है, तो आप लोगों से इजाजत लेते हुए मैं उसको रिसाइट करना चाहूंगी। और मैं इस पे बड़ा अभिनय करके दिखाती थी। और ये मेरे गुरुजी आचार्य लच्छू महाराज जी की जो डिसाइपल थी, श्रीमती कपिला नाथ शर्मा, शी वाज द डायरेक्टर फॉर लखनऊ कथक केंद्र एंड शी हैज टॉट मी द लेवल ऑफ अभिनय, और खासकर उर्दू और लिटरेचर पे किस तरीके से हाउ टू एक्सप्रेस द इमोशंस एंड फीलिंग्स वो बताती थी। तो एक फैज अहमद फैज साहब की कुछ पंक्तियां पढ़ के वी विल कंक्लूड दैट सेशन। फिर कोई आया, दिलेजार कोई नहीं। फिर कोई आया, दिलेजार कोई नहीं। राहरो होगा, कहीं और चला जाएगा। राहरो होगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगे तारों का अंधेरा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का अंधेरा। लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खरीदा, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चला। सो गए रास्ता तक के हर एक राह गुजार। सो गए रास्ता तक के हर एक राह गुजार। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमाए बढ़ा दो, गुल करो शमाए बढ़ा दो। तो मैं और मेरे का अयास, तो मैं
और पीने का आयास, अपने ख्वाब किवाड़ों को मुकम्मल कर लो, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकम्मल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं। So this is the beautiful poetries of Faiz Ahmed Faiz साहब। और एक बात मैं आज करना चाहती हूँ, सिर्फ I'll take only 30 milliseconds। हम लोग इसी महीने में उत्तर प्रदेश सरकार, हमारा उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड मिलके भारत का पहला राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर साहित्य समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मुझे मेरे समुदाय के साहित्यकार मिलने जा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ चुरा के लखनऊ ले जाऊंगी और मुलाकात करते हैं 21, 22 और 23 को नवाबों के शहर लखनऊ में, जहाँ पे आप बातें करेंगे क्योंकि और आप कहेंगे मुस्कुराइए आप कहाँ पे हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। थैंक यू सो मच। Now we will have a session for short story readings, and this session will be chaired by distinguished Kannada writer Vasudhendra ji. I invite Vasudhendra ji onto the stage. Vasudhendra ji is a noted Kannada writer, translator, and LGBT activist. He has received several awards, including Karnataka Sahitya Akademi Sahitya Sri Award, Dara Bendre Award, and U.R. Anantamurthy Award. He has started his own publication house called the Chanda Pustaka. It has published around 100 books till date, and these books have won more than 100 prestigious awards. He has instituted an award, Chanda Pustaka Bahumana, as well. His major publications include Mahana Swami, Aidu Paise, Varadakshine, and Harichitta Satya. The short story writer participants in this session are Kiran Rajkumarji in English. Kiran Rajkumarji in English, please. Kiran Rajkumarji is a noted LGBT activist and writer. He has several books to her credit, including Minor to Major, The CEO of Life, The Art of Becoming Myself. He has extensively researched on the LGBT issues in Manipur and neighboring areas. Another participant in this session is T. Sanjana Simonji in Hindi. Sanjana ji. संजना साइमन जी प्रख्यात हिंदी कवयित्री, वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और LGBT कार्यकर्ता। आप लव दाई नेबर ट्रस्ट की संस्थापक निदेशक हैं। आपने भारत में LGBT मुद्दों पर बड़े पैमाने पर शोध किया। पेशे से आप सरकारी कर्मचारी हैं। Our next participant is Anas NS. Anas ji आइए। अनंत जी प्रख्यात लेखक, विद्वान और LGBT कार्यकर्ता। आपने लिमिनलिटी ऑफ क्वियर लीव्स इन मलयालम नॉवेल्स, स्टडी बेस्ड ऑन सिलेक्टेड मलयालम नॉवेल्स विषय पर अपना शोध किया है। आपने समलैंगिक अध्ययन के साथ साथ कहानियों, संस्मरणों और कविताओं पर विस्तार से लिखा है। आपकी रचनाएं कई पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। After analysis, I invite A. Revati, writer in Tamil. Revati ji is a noted writer, gender activist, actor, and theatre personality. Revati ji has several publications to her credit, including Anarvum Uruvanam,
The Truth About Me, a Hijra Life Story. हमारा कहानियां, हमारे बातें, हिजड़ा के जीवनियों का एक संखान और ए लाइफ इन ट्रांस एक्टिविज्म शामिल है। आप संगमा संस्थान की निदेशक हैं और ऐसे ही कई अन्य संगठनों से जुड़ी हैं। आपने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में संकट हस्तक्षेप, सामुदायिक संगठन, प्रशिक्षण क्षमता, आयोजन, आदिवासी और दलित महिला आंदोलनों आदि विषयों पर कार्य किया है। सभी लेखकों का मैं साहित्य अकादमी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और इस सत्र के सारे सूत्र वसुधेंद्र जी, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें सौंपता हूं। वसुधेंद्र जी। Good evening, everybody. All the four short story writers, Kiran, Sanjana, Anuj, and Revati, and all the participants here. We always say in LGBT community that be very loud and clear. If you are not loud and clear, the other heterosexual community's noise will not allow people to listen to your voice. So we all have to be loud and clear when we are telling the story or speaking. What is the difference here is, one, a community member from LGBT, when he writes a short story or a poem, or it could be an essay or non-fiction, whatever it might be, the voice comes within the community which has suffered and which has really experienced what all the situations an individual faces in those communities. If it comes from outside, there are many attempts about that. There are many non-LGBT community members have written quite a lot about the LGBT community. But believe me, most of them are filled with homophobia. We feel it difficult to even accept that as the gay literature. That's how the things are. What happens here is, we have here LGBT, that's Q they have written, but we also include A, I, and we also say plus. Because the spectrum, the binary spectrum which we have, saying that this is man and this is woman, between that there are so many shades, even we do not know what all the other things exist. Because we never speak about these issues, so it's very rare, at least now after the decriminalization of section 377, now we are able to talk here. Otherwise, even that chance was not there for us. And traditionally what has happened is, this LGBTQ, especially for the whole society and the government, means generally focuses on the trans woman. If you look at, the madam spoke so well, if you look at her all presentation, the entire presentation of India, Indian LGBTQ representation, it's only trans woman. And she doesn't have any picture of a gay man of an India, or a lesbian of an India, or a trans man of an India. They have done so much of achievement, but that doesn't attract anyone. It's only trans women. This attitude has to be changed. They are also sufferers. We are also sufferers. Everyone is a sufferer. But what happens is, if you look at the kind of the activism it is very much related to, or very much similar to feminist activism and Dalit activism. Okay, it's fighting for our rights. Because of some gender issue or the caste issue, we have been oppressed,
and we are looking for the support from the government. This is all about the activism of LGBTQ. So now what happens is, there is a difference. In case of a feminism, in case of a Dalit, okay, they are also sufferers, but there is one advantage there. A Dalit man or a Dalit boy will have a Dalit mother, will have a Dalit father, will have a Dalit sister, and possible that he might have Dalit neighbors also. He doesn't have any problem in coming out as a Dalit. Same thing with the feminists. A woman has all the luxury of seeing another woman. She knows her mother is a woman, her sister is a woman, the aunt is a woman, all that is known. But if it's a gay man or a lesbian, absolutely no chance. You don't know who is a gay, who is a lesbian, who is what sexuality it is. It is not written, it is not discussed. Everything is under the carpet. That's where the difficulty comes. He is always alone. He doesn't have the community. Only the recent digital revolution has brought them together. It has brought them together so that they're able to identify their own communities. They're able to approach their own man. So that advantage has come from the digital revolution for us. We are thankful to that. What was happening on the short story or poetry or whatever you take in the trans or LGBTQ plus community, most of them are autobiographical. Most of them have written their autobiography, but there is a need for now to move out of the autobiography and think about other subjects, which are also closely related to the gay subjects. I will explain one situation. I'm a counselor, so I do the counseling for the LGBT community free of cost. So across the country and sometimes outside the country, I get calls for the counseling request. So one of the counseling requests, most frequently what I see here is the person who is most affected, who has most suffered, is not the gay man. There is a girl who has married the gay man. The wife of a gay man is more sufferer than the gay man himself. The society is put so much of pressure on the gay community, especially when they are 26, 27, they put so much of pressure, peer pressure, societal pressure is so high, they get convinced to get married, thinking that after the marriage, everything will be all right. I'll become automatically a heterosexual man after my marriage. But it will not happen. You will remain. It's a original characteristic. It's innate. It will not change. So, later on when they are married, their wife is the one who suffers a lot. So, we need to provide, we need to talk about these women who have suffered a lot. They are also part of the community. They are not outsiders. So, that needs to be taken care of it. And there is a lot of gender discrimination, which I already said. Within the community itself, we see so much of gender discrimination. One example I'll give you, it's a pretty funny example. A boy had come to me for counseling help. His problem was pretty unique. He's something around 27, 28, not married yet. He is living with his parents. So he cannot bring any person to his home because his parents are there. So he always have a hookup when he is in office. But what happens is, when he goes back home, he has got a lovely dog. That dog somehow smells that there is an external sperm on his body, and it will start barking so much that it is very inconvenient for him to even enter in his house. So he was worried so much, like my mom is asking what is happening, so why is the dog is barking so much at you? And I said, okay, fine. Generally, the counselors do not give solution. They are the listeners. Okay, they don't provide solution. Solution the client himself will come up with.
After 1 week, he came back and he said he got a solution. So what is the solution? I asked him. He said, my father gave me the solution. He said, the dog, the mother of this dog also used to bark at me like this. So when you met someone, please take bath and come back. Okay, so that is the solution which he gave. So now I am very sure that I ensure that I take bath after meeting someone, and then only I go to the home. Now my dog doesn't bark at me. So I am a counselor as well as an author. I'm a short story writer. So I got curiosity. I wanted to poke him. I asked him, okay, so your father told you, that's perfectly fine. Suppose if this solution was come from your mother, how would have you received it? If your mother had said that, same thing it does, whenever you go to someone, better you take bath and come. So how would have taken? He got angry. He got angry and said, so you can't think about mother like that, sir. You know, all the gender came into picture. In this patriarchal society, we think if a father is done, it's funny, it's good, it's entertaining. If it comes to mother, the same thing. We are not ready to accept. We think that our mother has to be pure and monogamous. Father can be anything. So that is the kind of gender discrimination which we have. And a lady, a mother of a son, she had come to me for the counseling help. The mothers of the gay man and the LGBT men are also sufferers. We need to focus on them as well. What has happened is, her son has told her clearly, I am a gay man, but I cannot convey the same thing to the father. Please, you take care of it. You please convey to the father that I am gay. So I cannot tell to him. He's very angry. He gets very angry. Now her problem is, if I tell that my son is a gay, he immediately blame at me. Because he thinks the upbringing of the child is not proper, that's why he has become a gay. So what do I do? So she was in such a confusion, she was in tears. I said, it's okay, no problem. So time will heal everything. So please tell your husband. So she told, and some fighting happened, and finally everyone accepted. After 6 months, she calls me back. She's crying again. I asked him, what is the problem? No, I was okay. My son was gay. I was ready to accept. But now he is saying that he is not even gay. He wants to be a trans woman. I don't want my son to be a trans woman. So please make him gay, but not the trans woman. That means what we have done is we are trying to create hierarchy within this LGBT community itself, which is unfair. Everyone is same. We don't have any distinction. So previously she also told, and other person also told that everyone is saying we need the equality. It's a fight for the equality. And another one which is very interesting about the counseling, from the my counseling which come to know is the fear of HIV. The fear of HIV is so high, and it is impacting them in enjoying the day-to-day body desires of a person. You are very familiar with the Sanskrit proverb saying that Kama Puranam na lajja na bhaya. That means someone who is horny, he will neither have the shy nor he will have fear. That's the very well-known famous quote in that Sanskrit. But the other thing is also true. If you are not fearless, if you are not shyless, shameless, you cannot enjoy the sex. Now what happens most of them is, since the awareness of the HIV and prevention measures has not been properly communicated across the community, so they are so fearful, many of them are so fearful, and they are not able to lead a normal gay life or a normal lesbian life. So they are really finding it very difficult. Okay, finally, the most of the things get sorted about, these things get sorted when knowledge spreads, knowledge about this LGBT spreads across the community, then automatically the homophobia gets reduced. So the purpose of such seminars, such short story writing sessions will really help us to spread the knowledge
and ensure that people come out of the homophobia, which is the need of the day. Homophobia is because they don't have the proper knowledge of the subject. And also, there is lot of mental illness is going on. Many of them are suffering from the depression. Many of them suffering from so many other mental illnesses. Nobody knows the cause because they cannot share the reason for their mental illness. The mental illness cause is mainly because they are not ready to come out of their closet. They are not ready to accept their sexuality, which is causing lot of havoc to their own life, which needs to be eliminated. This is going to happen only government takes a strong decision where it is willing to accept, just like they are giving the support to the trans now these days. They started now. It's not there from long time. Started now to recognize the trans community more. Like that, they have to give support to the gay community, lesbian community, and bisexual especially. They are also equally affected. Bisexual community and the queer, asexual, so many intersex. So unless government takes this bold decision, of all of them are equal. They are requiring equality and not your sympathy. They know how to lead life, but they need your empathy and not the sympathy. Then things are going to be better. And also, because government is not taking the bold step, okay, you can see that most of the literature festivals, the private literature festivals, are organizing LGBT sessions almost from 15 years back. So I attended even 15 years back, an LGBT session was conducted in Bangalore Literature Festival. But whereas when it is comes to really the academies started taking it up, it's too late. It's extremely late because they are also afraid. They have to go according to the government rules. So it has come so late. So, but still, it's good move. It's better late than never, right? So that's one. And another one which we have recognized, which I was discussing with my friend, is though government is talking, but the police department is not willing to accept these terms. Still, the trans community or the gay community or the lesbian or the bisexual, they have been harassed by the police department extensively. So that needs to be stopped. So that also needs the support of the government. These are the things which I wanted to discuss with you. So we have 4 of them. Each of them will take 20 minutes of time, and they will be coming up with this. They will be reading short story. Some of them will read in Hindi, I think, and some are reading in Tamil actually. I'll give a gist of it after she completes the reading of it. And others are in English, they are going to read. And if the time permits, there's such a nice panel is there. It's very rare you find such panel of the queer community. If you have any queries or if you have any doubts, we can have a small discussion. And I would like to thank Sahitya Academy for organizing or recognizing the LGBT community and also providing me an opportunity to come and speak here. Okay, so let us listen to the stories. Stories are same. So whether it is a heterosexual community story or the gay community story or trans community story, it all deals with the same thing. They need love, they need affection, they have problems, they have fear. So all rasas, which we call it as navarasas, are there in those stories also. Only thing is, it requires our open mind to listen, empathize and accept those stories. I am sure the people who are gathered here have got that kind of an empathy to praise them and take their stories. I welcome each and every story writer to narrate their story. Better we directly go to the story rather than talking about the story or giving any introduction of it. Read the story. After 15 minutes, I will give you a hint that 15 minutes is over, and then another 5 minutes we can close this thing. Is that okay? Thank you very much. Yeah, I'll go. Okay, because all the introduction has been already done, so I'll call one after the other. The first one is Kiran Rajkumar. He will be reading the story in English. Kiran, welcome.
Hi, good afternoon, everyone. I am extremely honored to be a part of such an event. I am extremely grateful to be here. So I just want to thank the Academy, first of all, for inviting me. And I have someone, she's not here, but I just want to thank Che Santa for all of the work she's done, and she's been very inspirational, and she's been a role model to us. So I just want to thank her. She's not here, but I just want to thank. So let me. She's not here, but yeah, I just want to thank her. She'll be coming tomorrow. So, Santa Correa. Yeah. Yes, yes. I just want to thank her. Okay. I just want to have a little self introduction. My name is Kiran. I come from Imphal, Manipur. I have authored three books till now, and I identified as a trans man. So yeah, life has always been about ups and downs and all. So I had both my fair share of both, but every time I fell, I always got up with something else in my hand, and that is what writing is to me. So I guess like pain became a muse to me, and then that's when I started writing because of the pain that I was feeling. And if I should say I consider myself as a hopeless romantic guy, like the classic example of how a protagonist does in a movie and all, something like that. Um, so yeah, actually, one of my friend they're here. They call me like Mr. Karan. So that's like the name of a protagonist in a particular movie where the protagonist becomes a writer after a heartbreak. So they tease me but I chose to believe that I did become a better version of myself than who I was before. So yeah, please be the judge of that. My latest book, this is my latest book that I'm going to read today, The Art of Becoming Myself. It's a memoir. It's like my transition journey from being born female to finally becoming me, finally being comfortable with myself. So this is what this is all about. And my story is not just about transition. This scarred my childhood, my first love, my first heartbreak, and all these emotions, with both positive, negatives, and human emotions, I should say in general. My book has all this thing. Um, and I just want to have a brief thing about how I wrote this book. So it was one of those moments where I felt like I want to jump in front of a truck and like end it all. Like I just want to ease all the pain, and then I just want to relieve myself from everything. That was one of the moments that I felt when I wrote this book. So I cried a lot that day, and I called my sister, and then I said that the society is pushing me away. I just want to run away from here, from the people. So I just want to end it. So my sisters just calmly responded, see, if you want to run away, go. If you want to go away from the society, go ahead. Or you can be one of those people who are bringing society changes to the society. You can be one of those person. And that was my cue. That's when I decided to let it all out. Because before that, I was not very open about this thing. I mean, I was open from the start, but I was never had my voice on anything. So from that moment on, I started to let all out, and then I started writing this book. I just want to tell something about my childhood. So I grew up in a middle class family. Among five, I was the youngest, and I would play with the boys, and it was nothing was happening. I didn't know that I was different from the others. So I loved playing cricket. Cricket was my whole life,
and my happiest was in a red cap and a sunglass where Yuvraj Singh wore, and a red t-shirt, and that was like my favorite. So that was the happiest back then. And then back then I didn't know what was different, what is this, what is that. I had no idea. So I was happy as a child. But then when a teenage hit, like a puberty hits, and then when we are like growing up, the things started changing. That's when I started realizing that okay, I am a little different from my friends, because at school I had to wear this uniform, and for our the indigenous Métis, we have to wear wraparound. We call panik. So since I don't know, obviously I don't know how to wear it. What would my grandmother do is they would like tie the end together so that it won't fall off. And the thing is, I cannot like take it off at school also, because if I took it off, then I don't know, I'm not gonna know how to put it on again. So at school, I believe I was there for at least 8 hours during the travel and all. So I never peed at school. I was like, I never peed for 8 hours, and it became a habit to me. That scared, that uncomfortability thing that I was feeling, it became a habit. And it was not a good habit. When I realized it starting out, people are asking, you should check your kidney, you should really do that. No, yeah, for by God grace, I'm not, I'm completely fine. But I'm just saying, it's something that happened. Things like that happen. And in the school also, I mean, home also. My mom, my dad, and everyone. Like whenever I had a haircut or something, it was never a good idea. They were like, the first going on around the house, and then I have to like hide my hair gel, and then like wear it like quietly. So that's how I, grew up. But I believe in between all these uncomfortable things that I was feeling, I was asking myself lots of questions like, why do I have to be different from the others? Why I can't wear like a comfortable trouser, like my friends were wearing at school? Why I can't be like them? Why, and why all of this whys and all this uncomfortable thing? It was in a dark phase. I was. But the thing, I believe that things are changing, times are changing, and it's not just one time thing. Like Ron wasn't well in a day, so the other two ma'am that was talking, like all the work they've done for the society, for the welfare of the trans community and all the LGBTQI plus community. It's such a great deal that they've done. They've sacrificed too much for them, for us. So I just want to take the opportunity to thank them, because we are just beginner. This is my first time actually to be here, so I'm a little nervous. So please forgive me for that. So yeah, I just want to take the opportunity to thank each and everyone who has done to protect the rights of the community, to make us stand confidently. And I'm able to stand here today because of a sister, of a mother, of a brother like you guys have done in the past. So I just want to thank you again. So with the book, I just want, since I cannot read the whole thing, I just want to have read my favorite part from the book. So the scene, it's a very typical. Okay, so I just want to read a few lines from my book. So it was like a typical setup. My dad, he was reading the morning paper. It was so early in the morning, and then my mom was like sweeping the floor. So I got up that day. I don't know what happened to me. I got up early, and then I talked to them, and I said that, "Mom, Dad, I just need to talk to you guys. Please come here." So they sat next to me, and then what happened? And I said that, uh,
Ay hormone therapy horage aise police na khamda yamna nuaite. That means in my language I was saying that whenever the police personnel stop me for frisking, they would stop me because I look like a boy. And then when I started responding, my voice before my hormone therapy was like a girl's voice. So, oh, Lupio, that means, oh, you're a girl. And then they would like simply ask me to go, and that hurt me. So I was simply asking my parent that thing, whatever the police persons were doing, that situation, it hurted me a lot. So I just want to have my hormone therapy started. So that was like the lamest reason to have the conversation with him. But I was like, I broke down simply, and it was a very emotional moment for me. And I was expecting something else, something from my parents. So my dad, like, he didn't react. He kept on reading the paper, and my mom responded, saying, for this thing we have to, like, take it slow. We have to do it. We've never stopped you from doing anything you love till now. But this has to be, like, we'll take it slow. We'll do it, but we'll take it slow. So I turned to my dad and I said, Dad, can I asked him. And then he responded, "Mm." And in Manipuri language, is like the simplest Manipuri language that can be. Yes, and that was it. I was simply, and he is in his early 70s, 70, 71, 72. So I was not expecting like the kind of answer, because I thought that he might not understand what this whole thing is. He just simply said, "Okay, that's it." And then I cried because it was so overwhelming. I cried, and my mom also had joined me crying. It was very emotional. So my dad was like, "Why? I already said yes. Why are you crying?" And my mom just said, "Oh no, these are happy tears." And then the next question my dad asked me was, how much is it gonna cost you for the whole thing? And that was his question. How ready he was to take me in. And that was like my moment of everything. It was just so overwhelming. So that was the part that I just wanted to read. Um, so yeah, that was it. I started my hormone treatment, and bit by bit I started changing, and it was very exciting to wake up, because at the first few months of after I started my hormone treatment, it was very exciting, because every day I would woke up to always something else. My mustache, like, having this little something here, and then my voice dropping down some a little bit deeper, and then my jawline, changing a little bit. So it was something that might not be visible to everyone, but it was like a whole new life to me. So it was my life changing experience. And after that, I thought it was just physical change, but that was not it. I didn't know that, I didn't realize that it was just the tiny mustaches that helped me build my self confidence, that helped me boost my self esteem, my that helped me, help me stand confidently. It helped me, like, feel secure, and everything that was doing because of the therapy that I was doing. It was not just the physical changes. And that's when I realized that, okay, this is all about me. Because, see, I cannot control somebody else's emotion. I cannot say control somebody else's attitude towards me. I can't ask someone to, okay, you have to accept me. I can't say that, but I can control my emotions. I can do whatever I want. Whatever the feel I have to feel, it's my human right to feel whatever. So that's one of the things that I realized after my hormone therapy, that I just have to be me. I have, and I started becoming comfortable with my body. And then yeah, that was all about my transition journey. And and um, you know and 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 for my book, it's not just about my my complaints and resentment towards the society, because all the things, it's also, I just want to share to all the people who are reading the book, that we are human beings, like ma'am also had said, that we are normal human beings. We are not different from the others.
So we have emotions like everyone has. We have a heart that loves can love someone too, right? And they are pushing us away. They think that we don't have the heart. We just have to stay single for a whole life because you are born that way. You know, you cannot find love. That's not it. We have a heart. We have emotions. So whatever there is, we have the right to feel it. So I just want to say that. So since we don't have much time, so I just want to wrap it up quick. So uh, my I just want to conclude again with the academy. So I just read one post that academy shared that the um, due to this, there are some conservative societies here also. So because of the society like there, the encouragement of like the literature and the the queer community and all and the literature, it's been some parts are being neglected because they are conservative society there. They are not accepting us. So, and they are doing this to promote us, to share our stories to us, to have our stories be heard because we have stories that need to be told. And I just want to thank the Academy for giving us such a space for, and last thing, I just want to conclude. Times are changing, peoples are changing, and I believe that it will keep changing to a better. And my brother, who once, I just shared that once I was fighting with him because I was cutting my hair, now calls me a brother. And and he was the first person in the family who asked me to use the men's washroom, not the other, my brother. And now my sisters, they never had anything back then also. But now they are saying that now, since I am the youngest, my elder brother is getting married. So I have to be the next in line to get married. So they're saying, okay, what's your plan? Because they are considering me as normal. My family is accepting me, and I believe everything starts at home. So my home, my family has started, the love has started. So I believe it all happened for you guys, and I just want to thank the academy, everyone here, my family, my extended family, everyone here. I just met Nivesh yesterday, but I just have a connection, and that is what is with us. I just met him yesterday, but then I felt like we talked for only a few hours, but I felt like we are like long lost brothers. And I felt the same way. I was hugging him, and then I felt like, oh, such a nice persons they are. I was saying to Nivesh, and that is what an extended family means, and it really means a lot to me to be here. So I just want to thank again everyone, my friends who are here to support me. I just want to thank everyone, and yeah, thank you very much. I thought that my time was up, so I was concluding. Okay. So since we have 2 minutes time, I just want to end this beautiful evening with one little conversation from the book. So it's a little personal, but it won't be personal. so um, okay, so it's a conversation between me and my ex-girlfriend's mother. So she is one person that I admire. She is a mother because she's a mother, but I admire her because she's a little, different from the other mothers. For my mother, I can understand because she has to love me, right? She has born. So, but for the other person, the other mother that I was telling. So when we were in a relationship with her daughter, the mother accepted me irrespective of the gender. We broke up because of our differences, but she accepted me as a person. She didn't, denied me or like say anything to. She respected me as a person. She considered me as a human being, where everyone should have done, where every mother of a daughter should have done. So I just want to take this opportunity and then thank her. So yeah, I'll just the my ending line. So I will find love again. Probably when I meet a parent who loves a daughter
to get married to someone who can give all the happiness in the world. Society over happiness, probably. Maybe then I'll fall in love again. And then, to my soulmate out there, please don't break my heart again. Thank you very much, Kiran. What it shows is I was waiting for you to read a story, but without reading the story, he narrated his story. So we need to be thankful that, right? And what is very important is looking at it, I feel we have more to tell than read the story. There's so much to tell. So everyone wants to tell their story. So that's what it indicates. So I'll invite now Sanjana Simon, T. Sanjana Simon, to read the story. Yeah, thank you. उपस्थित सभी आदरणीय गुणीजनों को, सभी अच्छे अच्छे खूबसूरत से लोगों को मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम। मैं संजना साइमन और मैं लव नेबर ट्रस्ट की फाउंडर डायरेक्टर मैनेजर हूँ और साथ ही साथ में कथक केंद्र नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय में जॉब करती हूँ। मैं यहीं से अपना अभिवादन और नमन पेश कर रही हूँ श्री सुमन कुमार जी को, जिनको मैं अपना पिता स्वरूप मानती हूँ। आज किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये उनका ही उत्साह है, ये उनका जोश है जो उन्होंने मुझमें मतलब उनका विश्वास है कि मैं लिख सकती हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सर सुमन सर, मैं आपको यहीं से नमन करती हूँ और उनकी अर्धांगिनी जी बैठी हुई है कला मंडली की सेक्रेटरी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और समय ना वेस्ट करते हुए मैं आगे चलती हूँ। ढाई आखर प्रेम के। ला भाई 4 कप चाय पिला दे, तेरे बच्चे जीते रहे, तेरा घराना जीता रहे, हर सोची मुराद पूरी हो, खूब खुश रहे तू। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हीना, मंजू, शबनम और रानी मानो सभी आने जाने वालों का ध्यान स्वतः ही आकर्षित कर रही थी। सब उन्हें बड़े ही गौर से घूर रहे थे। हीना और मंजू को तो लगता वो कोई हीरोइन है जिन्हें लोग देखने के लिए उनके आसपास भीड़ सी लगा लेते हैं। वो दोनों रोज आईने के सामने घंटों ही सजती संवरती रहती, कभी साड़ी तो कभी जीन्स टी शर्ट पहनकर इतराती। हो भी क्यों ना, दोनों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 10,000 से ज्यादा हैं। शबनम दिल की बहुत नर्म है, लेकिन वो बहुत सख्त बनकर रहती है। बात बात पर ताली और बिना बात के भी गाली। न जाने कैसा गुस्सा, कैसा आक्रोश, कैसी शिकायत है उसके अंदर। पान की शौकीन शबनम इन सब की गुरु है। परिपक्व तो है ही, लेकिन कहीं कहीं सफेद होते बाल उसकी बढ़ती उम्र और तजुर्बे को जरूर बयान कर देते हैं। लेकिन रानी कुछ चुप सी थी, खामोश और बहुत सरल। आज हल्की गुलाबी साड़ी पहने रानी अपने बालों से परेशान उन्हें जूड़े से बांधती और चाय की चुस्कियों के साथ अगली आने वाली ट्रेन का इंतजार करती। होली जो आने वाली है, घर में बूढ़ी माँ है, भाई है, छोटी जवान बहन है। जिम्मेदारी के बोझ ने तीखे नैन नक्श वाली रानी को खामोश और मेहनती बना दिया था। ना कोई सजावट, ना कोई सिंगार। खैर रानी तो बिना सिंगार के भी रानी ही है, जो रोज नियम से आती और ट्रेन आते ही आगे बढ़ बढ़ के पैसे मांगती, जैसे समय भाग रहा हो। वह उन्हें रोकना चाहती थी। चलो चलो ट्रेन आ गई है। मंजू शबनम ने तुरंत साड़ी नाभि से नीचे करते और पल्लू गिराते उठाते मदोश करती अदाओं में चलना शुरू कर दिया। उन्हें यूं करता देख आसपास खड़ी भीड़ के दिल मचल उठे। उन्हें लगा इंतजार व्यर्थ नहीं गया। अरे इन अदाओं के तो हम सब दीवाने हैं। हो ना हो, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की हीरोइनें तो ये ही हैं। इनको यूं करता देख मंजू गुस्सा हो गई और हिना को साथ लेके जल्दी से ट्रेन में चल पड़ी। शबनम भी जवानों की फुर्ती लिए ट्रेन में चढ़ गई। दिन में आने वाली ये ट्रेन मुंबई से आती है। शबनम किन्नर की टोली गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फिर गाजियाबाद में ट्रेनों में मांगती, गाती, दुआएं देती अपनी जिंदगी जीती है। आजा मंजू, हम दोनों साथ ही रहेंगे। कहीं कोई हीरो आ रहा हो इस ट्रेन से
हमें भी अपने साथ गाने में ठुमके लगाने का मौका दे दें। सही कहा ही ना, हीरो हो या विलेन, मैं तो उसकी बाहों में ही लिपट जाऊंगी। दोनों सहेलियां हंसी ठिठोली करती चढ़ गई उस ट्रेन पे, जिसका इंतजार वो रोज करती थी। रानी बिटिया, सही से मांगियो, किसी को भी छोड़ना मत, सबसे ले लेना। 50-50 तो यहाँ सब दे देते हैं। थोड़ा प्यार से मांगोगी तो 100 भी मिल जाएंगे। अमीर लोग बैठते हैं, मुंबई के बाबू साहब। शबनम गुरु ने समझाते हुए रानी को कहा। रानी तो पहले ही पूरी तैयार थी, उसे तो जैसे पैसे की बहुत जरूरत थी। बूढ़ी बीमार माँ, निठल्ला शराबी भाई और जवान होती बहन, ये सभी जैसे रानी का राजभाग खा रहे थे। राम राम बाबूजी, लाओ जी बाबूजी, तुम्हारे बच्चे जीते रहे, हर सोची मुराद पूरी हो, घर परिवार में सब खुश रहे बाबूजी। लाओ चाचा जी, माता रानी खूब खुशियां दे, जिस काम से आए हो सब काम पूरे हो जाए। रानी ने मासूम आवाज में हाथ जोड़ जोड़ के मांगना शुरू कर दिया। वो मांगती और शबनम को थमा देती। पान की पीक साफ करती शबनम हरे हरे नोट अपनी छाती में छुपे लाल बटुए में रख लेते। ला दे दे मेरे गोविंदा, अरे मेरे हीरो, मेरे सोना। मंजू हिना मस्ती भरे अंदाज में साड़ी का पल्लू गिराते उठाते जवान लड़कों को छेड़ते मांग रहे थे। लड़के भी मस्ती करते, कोई उन्हें करीना कहता तो कोई उन्हें दीपिका। ये सुन वो मन मन गदगद हो जाते। उन्हें गुमान होता कि इस गाड़ी की हीरोइनें तो वो ही दोनों हैं। अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने रोज का, जहां लड़के देखे वहीं लगी छाती दिखाने। अरे हिजड़े हो, हिजड़ों के समान रहो। ये लड़के मजा लेंगे और काम पूरा होते हुए लात मार देंगे। घर परिवार ने तो पहले ही निकाल दिया है, जो है वो ये पैसा है। पैसा है तो गोरी गोरी चमड़ी चमकती रहेगी और बुढ़ापे में भी 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। अरे बावरियों, इन लड़कों में दिल न लगा के अपने काम धंधे में दिल लगाओ। तुम दोनों को समझा समझा कर तो मैं थक गई हूँ। कल से ना आना मेरे साथ, वहीं जाना कल्लो जान के कोठे पे नाचने गाने, इन लड़कों के साथ मस्ती करने। ताली बजा बजा कर गुस्से में शबनम ने बोगी के दरवाजे पर खड़े क्रिकेट टीम के 4-5 लड़कों के सामने ही मंजू और हिना को खूब खरी खोटी सुना दी। उसके होठों से गिरता पान इस बात का गवाह है कि शबनम गुस्सा भी है और किस्मत का लिखा भुगत चुकी है। जो गलती कभी उसने की थी वो नहीं चाहती थी कि कोई और करे। उसकी सफेद होती लटों ने ये वो सबक उसे दिया है जिसमें हिजड़ा सिर्फ एक बोझ है, खुद के माँ बाप पर, समाज पर और शायद खुद पर भी। लो माँ, इस बोगी की कमाई। रानी अपने जूड़े से निकलती आवारा लट्टू को कसते हुए शबनम से बोली। देखो रानी को काम में दिल लगाती है, तुम्हारी तरह लड़कों के आगे पीछे नहीं घूमती। तुम दोनों से सुंदर है फिर भी अपनी किस्मत को जानती है कि तुम दोनों के समान सपने नहीं देखती। अरे ये लड़के हमें औरत नहीं समझते हैं, हम तो बस खिलौना है, खेला और छोड़ दिया। शबनम का लफ्ज उसके अतीत का दर्द बयान कर रहा था। जाने भी दो ना माँ, मेरी बहनों को कुछ ना कहो, रानी ने उन्हें बचाते हुए बोला। शबनम ने भौहें तंच कर कहा, जरा सीखो कुछ, रंग रूप सूरत सीरत में सब में तुमसे बढ़कर है। इतना शोर शराबा सुनकर बोगी के दरवाजे पर बैठा सुकून की तलाश में सिगरेट पीता महेश बकबक सुनकर थक सा गया था। उन्हें चुप कराने की नियत से महेश घूमकर उन पर चिल्लाया, अरे भाई यहाँ से हटो भी। इससे आगे कुछ कह पाता कि महेश की नजर गुलाबी शिफॉन की सादी साड़ी में रानी के ऊपर पड़ी। रानी अपने जूड़े से बाहर आती लटों से परेशान अपने बालों को खोलकर लटों को उनमें फंसाने की कोशिश करती। महेश थम सा गया था, उसकी आंखें पलके झपकाना भूल गई थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, खड़ी नाक पर सफेद चमकता नग, उस पर काली घटा से कमर तक गिरते खुले लंबे बाल जिन्हें तराशी हुई नाजुक उंगलियां सवार रही थी। महेश को यूं एकटक देखते उसका दोस्त राकेश व्यंग करता बोला, बाबू मोशाय, क्या रात का जुगाड़ देख रहे हो? महेश व्यंग से व्याकुल न हुआ, वो तो बस कामदेव के प्रहार से बुरी तरह जख्मी था। रानी की मासूम आंखों में उसे दुनिया का सुकून दिख रहा था। ला मेरा बेटा, तू जीता रहे, जिस काम से जा रहा हो वो सफल हो।
शबनम की ताली के साथ ये दुआएं महेश को जैसे सपनों से जगा गई हों। वो संभलता इतने में ही रानी जोर जोर से हंसने लगी। हंसते भी क्यों ना, मंजू और हिना वहीं पास की सीट में महिलाओं से मजाक कर रही थी। रानी को यूं हंसता देख एक बार फिर महेश को रानी से मोहब्बत हो गई। मौसी आशीर्वाद दो, एक क्रिकेट का फाइनल मैच खेलने हम मुंबई से आए हैं, हम ही जीते। महेश के दोस्त ने ये कहते हुए 50 का नोट निकाल के शबनम को दिया। बिल्कुल बेटा, तुम ही जीतोगे, हिजड़ों की दुआ खाली नहीं जाती। यह कहकर हिजड़ों की टोली आगे बढ़ गई। रानी अपने बालों को संवारती वहीं रुकी थी। ट्रेन में लगे शीशे में उसने बालों को दोबारा से कसकर जड़ा और आईने में खुद को देख खुद से नफरत सी हो गई। आईने में उसका दर्द भरा कल उसे चिल्लाता रोता दिखाई पड़ा। मोहल्ले वालों के ताने, घर की गरीबी और समाज के वहशी पुरुषों से लुटती उसकी आबरू ने शबनम माई के डेरे तक उसको पहुंचा दिया। खुद की आंखों से खुद को आईने में देख खुद से नफरत और खुदा से शिकायत होती उसे। अचानक उसे आईने में खुद को देखती दो आंखें दिखी। वो पलटकर देखती है तो अपने पीछे महेश को खड़ा पाती है। एक नजर महेश को देखकर वो अगली बोगी में अपने साथियों के पास चली गई। उसके लिए महेश भी उसी मतलबी दुनिया का एक मर्द था जो किन्नर को सिर्फ वक्ती जरूरत समझता है। अरे कहाँ रह गई थी रानी बेटा? शबनम गुरु ने चिंता के लहजे में पूछा। कहीं नहीं माँ, आंख में कुछ चला गया था, मुंह धो रही थी। इतना बोलते बोलते वो भी उसी बोगी के अंत में पहुंचकर अपनी टोली के साथ बैठ गई। शबनम भी थक गई थी और पूरी ट्रेन की बस एक बोगी बची थी। रानी को यूं जाता देख महेश को लगा जैसे रानी ने उसे अनदेखा कर दिया हो। अरे ये लड़की कौन थी? महेश बोल उठा। लड़की? लड़की? अरे भाई, साड़ी पहनकर मेकअप करने से कोई लड़की नहीं बनता। ये तो किन्नर है, ना नर ना नारी, किन्नर, समझा? और मैं ये बता, तू इतना घूर घूर के उसे देख रहा था। राकेश हंसता व्यंग करता चुटकारी लेता हुआ बोला। पास खड़ा सूरज भी हंसने लगा। बोला, भाई भाभी पर दिल आ गया है क्या? अरे यार, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो तो मुझे एक लड़की जैसी लगी। महेश बड़े सहज भाव से जवाब दिया। लड़की जैसी और लड़की होने में अंतर है भाई। सूरज ने जैसे समझाना चाहा। ये लोग हिजड़े होते हैं जिन्हें किन्नर भी कहते हैं। ये लोग नाचते गाते और शगुन मांगते हैं। अरे भाई, मुझे भी पता है ये लोग किन्नर होते हैं, लेकिन किन्नर होना कोई गुनाह है क्या? ये लोग भी तो इंसान होते हैं। महेश ने थोड़ा गुस्सा होके ऊंचे स्वर में ये बात कही। इंसान तो होते हैं पर अच्छे इंसान नहीं। सुना है ये लोग बहुत गलत काम करते हैं। अरे मुझे तो इनसे डर लगता है कहीं हमें भी अपने जैसा ना कर ले। हम लड़कों को पहले रिझाते हैं, फिर हमारा लिंग कटवा के हमें अपने जैसा बना देते हैं। अब इनके तो बच्चे हो नहीं सकते। जनसंख्या बढ़ाने का ये नया तरीका है। राकेश भद्दा मजाक बनाकर हंसता हुआ बोला। शट अप यार, व्हाट्स नॉनसेंस। तुम लोग कैसे पढ़े लिखे हो? बिना किसी को जाने ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या तुम उन्हें जानते हो? उनके साथ रहे हो? कभी एक घंटा भी उनके साथ बिताया है? तुम उनकी घर परिवार के नहीं हो, उनके जैसे नहीं हो, तो बेवजह क्यों बुरा बोलना किसी को? बस जो सोच दुनिया ने इतने सालों से बना ली, तुमने भी उसे मन में बिठा लिया। अरे यार, वो भी इंसान है हमारी तरह। आदमी औरत तो बाद में है। महेश दोस्तों को डांटता हुआ बोल ही रहा था कि स्टेशन का शोर आने लगा। कुली कुली, चाय वाला, समोसे वाला, आलू पूड़ी ले लो। महेश के दोस्तों ने महेश की बात अनसुनी करते हुए फटाफट अपना अपना बैग सीट के नीचे बंद कुंडे से खोलकर नीचे उतरने लगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलो जी, आ गई हमारी मंजिल। दरवाजे पर खड़ी क्रिकेट टीम। राकेश और सूरज चिल्लाकर बोले। सभी साथी बहुत खुश और जोश में थे क्योंकि वो मुंबई से दिल्ली के साथ मैच खेलने आ रहे थे। लेकिन महेश की मंजिल जैसे ये नहीं थी। महेश की निगाहें रानी को ढूंढ रही थी। वो ट्रेन से उतरकर रानी को देखने का प्रयास कर रहा था। चलो कप्तान साहब, सुना है हमारा होटल बहुत पास में है, टीम के एक सदस्य ने महेश से कहा। महेश मन ही मन हंस पड़ा। कप्तान क्या खेलेगा? कप्तान तो आज खुद क्लीन बोल्ड हो गया है। थोड़ा संभलता महेश टीम से बोला, आप लोग होटल में एंट्री कीजिए, सामान वगैरह रखिए, मैं जरा आज का न्यूज़पेपर और कुछ जरूरी सामान खरीद कर तुरंत आता हूँ। और हाँ, मेरा रूम नंबर व्हाट्सएप करना मत भूलना।
सुन, तूने कुछ खाया कि नहीं? दीदी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपकी गाड़ी इतनी देर से क्यों आई? आज थोड़ी देर हो गई, लेकिन तुझे खाना खा लेना चाहिए था। और बाबू, अगर मैं कभी काम पर ना आई तो क्या करेगी? ऐसा ना कहो दीदी, तुम रोज आया करो। तुम आती हो तो लगता है। कहते कहते मुस्कान रानी से लिपट गई। दूर खड़ा महेश रानी और उस छोटी सी लड़की की बातें सुनकर शांत हो गया था। रानी के प्रति अपनापन बढ़ रहा था। रानी की गोद में बैठी उसकी साड़ी के पल्लू से खेलती वो लड़की किसी सर्कस कंपनी की लगती थी। 5-6 रबर बैंड लगे बाल और गालों पर कहीं लाल कहीं काला गोल निशान, मानो जैसे कोई जोकर होगी। अच्छा चल बता, आज क्या खाएगी? रानी मुस्कान से बोली। मैं तो आज समोसा खाऊंगी। मुस्कान खुश होकर बोली और रानी के साथ समोसे वाले के पास चल दी। तू कौन है रे? पहचाना नहीं तुझे? महेश ने दूर से शबनम को अभिवादन करा। अरे मौसी, अभी जिस गाड़ी से उतरी हो उसी में तो मिला था मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट टीम, याद है आपको? अरे हाँ हाँ बेटा, याद आ गया। बुढ़ापा है ना, चीजें भूल जाती हैं। शबनम महेश की भोली सूरत को देखते हुए सोच रही थी। हाँ बेटा, ले आओ चाय। सुना है मेरे लिए भी लेके आना। शबनम खुश होकर बोली। चाय की दुकान जाते जाते हिना मंजू से बोल ही रही थी कि बुढ़िया ने बड़ा लंबा हाथ मारा है। आज तो महेश जैसा गबरू जवान शबनम को मिल गया। मौसी, ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहती हैं? हाँ बेटा, दोनों मेरा ही चेला है, मेरे बुढ़ापे का सहारा। वैसे दोनों अच्छी हैं, लेकिन दुनिया की बातें नहीं जानती हैं। आप तीनों लोग ही साथ रहते हो क्या? नहीं नहीं, मेरी बेटी रानी भी मेरे साथ रहती है। वो बिल्कुल मेरी औलाद जैसी है। सबसे छोटी है, लेकिन बहुत समझदार है। कहाँ है आपकी रानी? मेरी रानी यहीं कहीं स्टेशन पर मुस्कान को खिलाती पिलाती घूम रही होगी। मुस्कान एक अनाथ बच्ची है जिसका कोई नहीं है। मुस्कान उसको अपने बच्चे के समान प्यार करती है। महेश इतना कह ही रहा था कि रानी मुस्कान के साथ पास आ खड़ी हुई। वो महेश को देखते ही जान गई कि ये वही आंखें हैं जो आईने में उसका पीछा कर रही थी। लो, आ गई मेरी मुस्कान। मुस्कान बेटा, आज बड़ा मन कर रहा है, बाहर अमृतसरी नान के ठेले से मेरे लिए जरा अमृतसरी नान ले आ। बड़ा मन कर रहा है खाने का। रानी अपनी गुरु शबनम की बात सुन के वहां से चल पड़ी। जैसे ही रानी ने चलना शुरू करा, महेश अपना सब कुछ भूल के मोबाइल उठाया और बहाने से बोला, मौसी, टीम मेंबर्स का फोन आ रहा है, मैं जरा चलता हूँ। रास्ते में वो रानी के साथ में ही जा रहा था। महेश समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो चलते चलते रानी के पास आ खड़ा हुआ। महेश के कंधों से भी नीचे आती रानी लड़खड़ा के महेश के ऊपर गिरती कि महेश ने उसे संभाल लिया। उसकी आंखों में देखकर बोली, इतना चुप क्यों हो? किससे डर रही हो? किस बात से भाग रही हो? रानी जल्दी से खुद को महेश से दूर करती बोली, जी नहीं, किसी से नहीं, डरना किस बात का? फिर इतनी चुप क्यों हो? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? रानी महेश की बातों से खुद को बचाते हुए जल्दी जल्दी नान लेने जाने लगी। सड़क पार करते ही अमृतसरी नान का बड़ा होटल था। नान वाले को 4 प्लेट नान का ऑर्डर देके वो पास की दुकान पे ही लस्सी लेने चली गई। उसको यूं जाता देख महेश ने उससे बोला, तुम सबका ख्याल रखती हो, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? दिन भर करती क्या हो? मैं तो खाना पकाती हूँ। मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। लो, तुम सारा दिन काम करती हो, घर जाकर भी काम करती हो। बाबूजी, ये काम नहीं है, ये सब वो है जो मुझे पसंद है, जो मुझे औरत बनाता है। रानी थोड़ी देर में वापस आ गई। कुछ सामान उसके हाथ में था। महेश बोला, तुम बात को समझ नहीं रही हो, तो आप फिर मुझे क्यों समझाना चाहते हैं? तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या समझूं? यही कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रानी को जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल रही थी, लेकिन पत्थर से बनी रानी सर झुका के बोली, प्यार तो मैं खुद से नहीं करती, तो भला आप मुझसे कैसे करेंगे? रानी, मैं सीरियस हूँ। हाँ, सही कहा आपने, आप बहुत सीरियस हैं, आपको आईसीयू जाना चाहिए। रानी को पकड़कर महेश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से पूछा, रानी, क्या तुम शादी करके एक अच्छी जिंदगी नहीं जीना चाहती? रानी पलकें झुकाए चुपचाप खड़ी रही, मानो वो कोई बुत हो। बोलो रानी, कुछ तो बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी तरफ देखो तो, मेरी आंखों में देखो। रानी ने पलकें उठाकर महेश को देखा।
उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब सा था, जिनके पार महेश उसे धुंधला सा दिख रहा था। शायद यही हकीकत है। तुम रो क्यों रही हो? महेश ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। एक घर परिवार से निकाली हुई बेसहारा सड़क पर भीख मांगते किन्नर और उसके सर पर रखा ये अपनेपन का हाथ। अब तो जैसे रानी खुद को रोक ना पाई हो और रोते रोते महेश के कंधों से सिसकियां भरते हुए बोली, चले जाओ महेश, चले जाओ। तुम्हारी मेरी दुनिया में बहुत अंतर है। जहां मैं हूँ वहां सिर्फ बदनामी है। मैं एक टूटे पत्ते के समान भटक रही हूँ, कभी किसी के पैरों में तो कभी गंदी नालियों में। और तुम दरख्त की एक सुंदर शाख हो। तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अपने वो जड़ है जिनसे तुम कभी अपने आप को अलग नहीं कर पाओगे, और अलग भी हुए तो सूख जाओगे। तुम्हारे घर वाले कभी भी किन्नर को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। महेश रानी को चुप कराता उससे बोला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्यों खुद को किन्नर बोलती हो? मैं नहीं, दुनिया बोलती है, और सच्ची तो है। मैं किसी का वंश नहीं बढ़ा सकती, बस वंश बढ़ाने की दुआ दे सकती हूँ। रानी को यूं रोता देख महेश के भी आंसू निकलने लगे, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से रोके था। औलाद तो हम गोद भी ले सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा रहूंगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम मेरी बनकर रहना। महेश रानी को सीने से लगाकर विश्वास दिलाता हुआ बोला। अब रानी भी मान चुकी थी। तभी महेश का फोन बजा। मुंबई से उसके पड़ोसी का फोन था। उसने बताया कि उसकी माँ को हार्ट अटैक हो गया है, सीरियस कंडीशन पे आईसीयू में भर्ती किया है। महेश ने तुरंत फोन अपने दोस्त को करते हुए कहा, तत्काल में मेरा एक एयर टिकट बुक करो, मुझे अभी मुंबई जाना है। उसको ऐसा करते देख रानी को समझते देर न लगी कि उसकी मनुष्यत ने महेश के साथ भी कुछ बुरा कर दिया है। महेश, वापस जा रहे हो क्या? आंसू पोंछते हुए उसने महेश से पूछा। क्या हुआ महेश, इतना क्यों घबरा रहे हो? रानी, मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, मुझे इसी वक्त निकलना होगा। इतना कहते हुए महेश ने रानी का हाथ छोड़ दिया और जाने लगा। रानी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दरवाजे आई खुशियों की डोली यूं अचानक उसकी खुशियों की अर्थी बन जाएगी। 2 कदम चलकर महेश फिर से रानी के पास आया और धीमे से कहा, रानी तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल वैसी जैसे महेश को चाहिए। तुम्हें कोई कमी नहीं है। मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। सुनो, एक बात कहूं, तुम आ जाना, मैं तुम्हारी ही रहूंगी। और सुनो, तुम्हारा नाम चाहिए, बस तुमसे जान पहचान चाहिए। शादी मत करना, तुमसे शादी नहीं, तुमसे इंसान होने की वफादारी चाहिए। तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। माँ की मर्जी से ही शादी करना, उनका दिल न दुखाना। अपने सपनों को मारती हुई, दिल पर पत्थर रखती, आंसू पोंछकर महेश को हिम्मत देती, उसके हाथों को मजबूती से पकड़कर बोली, 2.5 आखर प्रेम के, 1 आखर तुम रख लो, एक अपनी पत्नी को दे देना, और जो बचा आधा वो मेरा नसीब। ये सुनकर महेश की आंखों से आंसू न रुके। वो भी रोता हुआ महेश रानी के हाथों को चूमता वहां से चला गया। हमेशा क्रिकेट के मैच जीतने वाला ये महेश आज जिंदगी में प्यार का मैच हार गया था। किस्मत को यूं ही मंजूर था। महेश ना चाहते हुए भी चला गया। रानी उसे जाते हुए देखती और अपनी किस्मत का दिया जहर फिर हंसकर पी लेती। रानी रोज गाजियाबाद से दिल्ली आती जाती। वो मुंबई से आती ट्रेनों को बेचैनी से देखती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, कुछ है जिसका उसे आज भी इंतजार है। दीदी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले जैसे मेरे साथ खेलती क्यों नहीं? ये गाड़ी तो कोई खिलौना नहीं है, तुम फिर भी इन गाड़ियों को यूं क्यों घूरती रहती हो? रानी को यूं खोया खोया देखकर कुछ ही दिनों बाद मुस्कान ने मासूमियत से भरकर रानी से पूछा, तो अभी छोटी है, जब बड़ी होगी तो समझ जाएगी। दिखावटी हंसी के साथ रानी ने मुस्कान को गले से लगाया और मुंबई से आती हुई ट्रेन की तरफ हाथ फैलाकर धीरे से बुदबुदाई, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूंगी। मानती हूँ कि मैं अधूरी हूँ, तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकती। मैं आधे ही सही, मुझे मेरा आधा अक्स लौटा दो। आ जाओ, मुझे मेरा आधा अक्स लौटा दो। मैंने बहुत कुछ उसमें से गायब कर दिया है। Thank you very much, Sanjana. It was, though I don't understand Hindi, but I could feel the emotions the way she was talking. I think the emotions are more important than the language itself. So I could
feel the way she was narrating it. Thank you very much, Sanjana. Now I invite Anaj NS. So he writes both in Malayalam and English. Now he'll be reading through English, I believe. Yeah, thanks. Come. Hello, all. Hope you can hear me. As you keep insisted, I'm skipping directly to the story reading. So the name of the story is Inside Out. Here we go. We can't agree that two men could be married. This is not our culture. A man in his black attorney dress in front of the Supreme Court is speaking on TV like he is defending his whole country's pride. Pride is supposed to be my thing, I thought. My mother was watching TV. What are we how to hear in this age? Two men want to get married together, she explained. My heart trembled. How could I tell her that she is burning me alive with her words? What's the problem with that, Amma? Why couldn't they get married? How is it even possible, Da? Marriage should be between a man and a woman. It is called marriage. Two men staying together is still a bachelor party. I liked her expression. Yeah, it probably is a long-lasting bachelor party. I remembered my first love and living together during my MPhil days. He was from a rural village and I was brought up in the city. He was so innocent about everything. A frightened baby-like soul. I wasn't ready for that much innocence then. That's the reason I believe about the breakup with him. How can he be gay and innocent together in these places? You have to be a method actor, a researcher, self-sufficient individual, mental health expert, and a heavy-minded person to be a surviving gay here in this country. Your innocence can betray you, and you have to pay for it. His tender eyes were so clear like a transparent marble when I decided to tell him that I couldn't take it anymore. He didn't understand at first. What is my problem? He asked. I was sure he would be crying soon. His throat has the heaviness of a traffic block in the morning. You don't have any problems, and that's what's bothering me. I have many problems and I can't deal with your tenderness, I said cruelly. He's married to a girl now. His mother knew that he was not into that girl, but she wanted to calm her siblings. They were all compelling for his marriage. It is true that I regret the decision to leave him now, but I am a human and gay combined, and thus I could easily teach my mind that it is just confusion and everything will be heavenly soon. Every photo in his Facebook has a Venu Nagavalli touch. That melancholy look in him could kill me someday. My so-called bachelor days with him were my best, but I had to leave that behind. That's my destiny. Again, destiny is my favorite word to play. It could be word of my life. Mother didn't leave the matter. Which man will take the responsibility of being silent to make the family perfect? I wondered, why should anyone be silent about anything inside a family? Son, being in a marriage is like someone is silent for others to speak. Like I did to your father, like your daughter, like my daughter-in-law is going to do to you. I don't think so. That reply was accidental. I couldn't bring her a daughter-in-law. She may have to deal with another young man who steals her son. So you will be a progressive husband? My mother laughed like I was making a joke. Answer in my mind is different with another dimension. But I suppressed it. Yeah, I am a method actor. That's a gay-born talent. We could get lifetime achievement Oscars or Falke Award for convincing long-lasting acts. Why couldn't I be progressive? I smoothly led the conversation. She rose from the sofa and reached the kitchen entrance and said, a man's progressiveness is also rooted in some woman's silence. No man could be progressive around a girl ultimately. Why is that? Are you progressive in this house? She was ready to destroy me like a pro. How could I tell her that I am too much progressive with a heart that is ready to submit for another man rather than ruling by others? I even like to get ruled by a baby man.
Ha, is I too politically appropriate? Whatever. Am I not progressive here? I don't think so. You are so dependent on women like any other man. Still, you think that you are on your own. Shut up, Amma. That's not true. Good son, showing progressiveness by shutting a woman's mouth is so impressive. Yes, she destroyed me like a piece of cake. I always thank myself for being a man lover so that I could deal less with feminine dramas. I wonder how these people deal with this on a daily basis. Okay, I'm too far from political correctness. No one is bothered to be correct around myself when a cure subject arrives and they still expect me to be calm and correct. I still can't think about two men getting married. She started cooking for dinner. What about two women? I was curious. It may be so soothing. No men to interfere inside the house. It should be allowed, I think. My mother is being too feminist and anti-gay and pro-lesbian ideas. It can be good. Amma, what if I don't marry a girl? I let a hook. She gave me a furious look. Then what are you going to do? You are skipping marriage for what? Are you afraid about treating a girl because I said all that? She's getting something. Skipping marriage by thinking about doing something unfair to a girl is the classic explanation of my people. Actually, it's not about treating girls, it's all about boys. Treating, getting treated, wounded, and healing. Everything is about boys. But if I marry a man like the news said, that was the most risky and daring thing I ever said to her. I couldn't believe I passed that question. This question has the potential to be my coming out story. I should pack my things. Do you have thoughts like that? That's why you want to skip marriage? She was damn serious. Oh my god, what have I done? Why did I ask her that? My whole plan was to leave this country and wait for her death to be an openly gay. Again, a mandatory thought of gay soul. It's not like that, Amma. I just want to know your opinion. I wanted to play safe. You know my opinion. One more to ask. It's a dead end. I have to leave this country soon. Do you have something to say to me? She is standing like a mystery. I have many things to say to her. At least one thing to say. Even though I am single now, I need peace of mind to be free about my boyfriend in future. No, Amma, nothing. I left there and went to my room. I looked at myself in the mirror. You could have told her. I said to the person in that mirror, he's too afraid. This has to end today. I can't deal with this more. I want to retire from acting like any veteran would do when they feel it's enough. I packed my things to face anything. Anyway, my leave is going to end next week. I have to go to Kolkata then. This packing has to be like there is no return. I consciously moved most of my things to my tiny apartment there during the last whole year. So it's easy. I took my phone and opened WhatsApp. Amma has put a photo of a new flower bunch from her favorite hyacinth. I swipe up and typed, Hyacinth is a gay icon, Amma, like your son. I stood there for a long time before sending that message. I turned off my mobile data and sent the message. If I turned on the data again, it will be a one tick marked message. The sight of two ticks can kill me. The blue ticks could give me a heart attack. I turned on the data. There were two ticks immediately. Oops. Should I unsend it? No, I have to deal with it. I finished packing in a few minutes and got ready. A message tone popped up. I could see the locked scene and it was Amma's message. It was a voice message. I have to open it. My heart trembled. I opened the message. This is one of the few times her sound could kill me. Her voice is played. I don't know about Hyacinth, but I do know about you. Come here. What is she saying? She knew about me and acted like nothing? Her comments on gay marriage was to frighten me to change mind or him to get provoked. A knock came at my door. Open your door. I opened it. She was there. So this is your progressiveness? I couldn't understand woman. Is she accepting me or rejecting me? I can deal this with Amma.
I love you most, but I can't pretend anymore that everything is okay. I'm not okay in this world. She was smiling. I may not be progressive. That doesn't mean I could listen to you. I can't be okay with you being someone I didn't expect earlier. I knew something because once a boy from your college called me crying that he could not live without you. I couldn't say anything to him then. What? He called me mother. What a treason. Then I became thankful to him. Who was he? She asked. He was my lover. Then why did you leave him? I don't know. I thought it would be better then. Don't break hearts, son. I don't raise you for that. I am broken now because you are breaking hearts for no reason, including mine. So I am the culprit now. What the hell? I am the one who breaks hearts. Like I don't have any breaks. Why are you packed? You said you are leaving next week. Were you trying to elope? I was going to. It's no time yet. I'm still not mad at you for not loving a girl or loving a boy. I may need time, but you are safe. I didn't know she could turn this crucial moment to nothing. She's a pro. Am I out now? I'm still confused. I still don't feel the difference between being out and an outlaw. I went out. Mother was in the garden. She was caressing and watering her hyacinth with a new face. That's all. Okay, I skipped my introduction in front. So myself, Anas. So I like to use the word cure instead of LGBTQ that umbrella term because for me cure is my politics and politics is everything. I believe. I live in a country where ruling people want to be inclusive in a literary event, but don't want two men get married legally. So we have to speak it for everyone. And even the breath of a pure person is politics because being alive is politics for every pure person. Because a majority of people want to kill, want to erase, want them to be not alive because they want to live peacefully. I don't know how they could. Getting killed is not an easy thing. Maybe they don't know that. Like Salim Kidwai said on the eve of the ruling of 377 in 2018, no one will understand this feeling unless you lived a life with fear. Yes, we lived many moments with fear, being hurt and in fear of hurting our loved ones. That's the most fearful thing. If I say something, my mom, my loving friends, my family may get hurt without any reasons. Uh, they have many expectations about me and the story of everyone. Without asking ourselves, they didn't ask me about anything, what you want to do, what was your plan. They planned everything, and when we say our truth, they are getting. They said that you are cheating and you break my heart, and you have to leave this family or something like that. Lucky that I was accepted by my family, so the dramas are less for me. Maybe that the culture of my state too. I am from Kerala. I think it has more comparatively more inclusiveness for LGBTQ people. It's comparatively now. So yeah, that's all. My mic is blank. Anas said a beautiful sentence. No one should live in fear. Before this 377 being removed from Section 377 is erased from our legal system, we were really living in fear day by day, like so much of fear. And with fear,
there is no democracy. So no one in this country should live in fear, whatever it might be the reason. Yeah. Thank you very much, Kiran. It was a wonderful story, and I think you touched almost a phase every gay man go through. Every gay man go through in their life. You touched that phase. Okay. Thank you very much. Now I invite A. Revati. So she's going to tell her story. Revati, most welcome. शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। शेयर पर्सन ने बोला और ऑडियंस भी समझ को मैं हिंदी में बात करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जो मेरा राइटिंग है वो हिंदी में पढ़ नहीं सकती हूँ, लेकिन अपना मातृभाषा है तमिल है, वो खुद हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मैं पूरी नहीं पढ़ेंगी, थोड़ा हम तमिल में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करती हूँ, जो मेरा प्ले, जो मेरा राइटिंग है उसके बारे में, क्योंकि राइटिंग जो हम तमिल में लिखते हैं वो बराबर हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको नहीं बोलने के लिए नहीं आता है, लेकिन दूसरा का टाइप में मैं बोल सकता है, अपना कहानी के ऊपर मैं बोल सकता हूँ। मेरे को 13 उम्र रहेगा जब भी मैं 10वीं पढ़ रही थी। पहले मेरा लिखना शुरू किया था पोएट्री। किसके ऊपर है? जो मेरे ऊपर इतना नफरत नहीं करते, मेरे को तमाशा नहीं उठाते, ऐसा कोई मेरा बाजू में बैठते स्टूडेंट है, उनके लिए प्यार का चिट्ठी है वो। लेकिन अभी तक मैं उसको दिया नहीं, क्योंकि उसी टाइम में पुरुष था, एक पुरुष और एक पुरुष को कैसे लव लेटर दे सकता है। मुझे डरती थी मैं उसके हाथ में देने के लिए, मगर उसका हाथ में दिया होगा तो वो थप्पड़ में एक मारता था और प्रिंसिपल तक लेके जाता था, मेरा एजुकेशन ब्रेक होता था। इसलिए खुद मैं लिखती हूँ, खुद मैं पढ़ती हूँ, बाद में उसको पाठ को फेंक डालती हूँ। सेकेंड डे 1999 में संगमा करके एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं ज्वाइन हुआ, ऑफिस असिस्टेंट है। वो एक लाइब्रेरी है जो गे लेस्बियन के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ न्यूज होती है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करता है। मैं क्या करती थी, वो न्यूज़पेपर के साथ मैं पढ़ती थी, जब वो कर्नाटक में थी। कर्नाटक में कन्नड़ा न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था। मुझे कन्नड़ा भी पढ़ने के लिए नहीं आता है और इंग्लिश भी पढ़ने के लिए नहीं आता है। आज का जनरेशन लोग इतना अच्छी से हिंदी बात करते हैं, इतना अच्छी से इंग्लिश बात करते हैं, लेकिन अब 1999 से हम बहुत फाइट कर रहे हैं। लोग ऐसा पढ़ना चाहिए, काम पे जाना चाहिए, कुछ आपको मिलना चाहिए। इसलिए हमारा लाइफ पूरा फाइट करने के लिए कुछ चला गया, अपने के ऊपर, अपने के बारे में कुछ हम सोचा भी नहीं था। इसके बाद संगमा में मैं सोचा है अपना कम्युनिटी के बारे में, क्यों एक किताब भी नहीं है, कोई लोग भी लिखा भी नहीं है। इसलिए 2004 में एक किताब लिखा हूं मैं, वो ट्रांस वुमेन कम्युनिटी के बारे में। पहले बोला था उनर्वम उर्वम, इजरम का आत्मा कथा, वो मैं बाद में आपको बताती, बराबर है, वो किताब का नाम है। योड़ा प्रश्न है, वो पब्लिश किया था 2005 में। वो किताब के लिए मेरे को कनाडा में तो तमिल लिटरेचर गार्डन है, वो मेरे को अवार्ड भी मिला था, मेरे को वो अभिमन्यु अवार्ड करके मेरे को मिला था। फिर उसके बाद मैं सोची थी अपना कम्युनिटी के बारे में मैं पूरी लिखता हूँ क्या, अब यदि कुछ बाकी आएगा, क्योंकि अपना खुद का स्टोरी लिखने से हम अंदर से जाको लिख सकते हैं, मगर दूसरा का स्टोरी सुनकर में लिखने से हमको बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, अगर पूरी का कहानी भी नहीं आती। अगर उसके टाइम तेलुगु में मेरे को आर्टिकल आया था पहले किताब का बारे में, पेंगुइन ने वो देखा है, पेंगुइन वाले ने मेरे से परमिशन पूछ रहा था इंग्लिश में वो किताब को छापने के लिए। मैं बोला था वो किताब को मत छापो, क्योंकि मेरा आत्मा कथा को मैं लिख रही हूँ, मैंने उसको छापो। मेरा आत्मा कथा को मैं एक ही दिन में, एक ही महीना में नहीं लिखा है, 4 साल हो गया मेरा आत्मा कथा लिखने के लिए। 1 महीना लिखेंगे, थोड़ा किताब को बंद करके रखेंगे, फिर 1 महीना के बाद उसको ओपन करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेरे को याद आता है, चुना याद सब आते हैं, ये छोड़ लिया मैं लिखने के लिए। जब वो याद आने के बाद में उसको छोड़ को मैं लिख के चला जाती थी।
ऐसे 4 साल बन गया लिखने के लिए। वो किताब भी आ गया। ये दोनों किताब भी 322 यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिलेबस में आ गया, क्योंकि जेंडर स्टडी पढ़ने के लिए उसी टाइम पे अपना बारे में किताब नहीं था, इसलिए मेरा किताब सब यूनिवर्सिटी में चला गया। मेरे को यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत मौका मिला है और अपना खुद का कम्युनिटी के अंदर भी लिखना भी वो लोग को शुरू कर लिया। लेकिन अभी लोग सोचता है पूछता है, मैडम आपका किताब के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एमफिल कर रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, आप लोग हेल्प करो। मैं सबको ही बोलेगा क्यों तुम लोग को जो पुरुष फायदा होता है बाद में औरत बनता है उनके बारे में क्यों सोचता है, कोई औरत फायदा होता है पुरुष बनता है उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे। लेकिन लोग सब बोलते हैं ऐसे कैसे होते हैं, मर्द तो औरत बन सकता है लेकिन औरत थोड़ी मर्द बन सकता है, मर्द औरत बन सकता है, औरत कैसे मर्द बन सकता है, ऐसा लोगों को हम देखा भी नहीं ना। तुम लोग तो रोड में आते हैं, बस स्टैंड में रहते हैं और भीख मांगता है, हमारे से झगड़ा भी करता है, लेकिन ऐसा लोगों को हम देखा भी नहीं है ना। खुद अपना कम्युनिटी के अंदर भी नहीं मानते थे, क्या बोलते मालूम है, हम तो बाल लंबा रख लिया, मुंह चाच लिया, कान भी हम फूल डाल दिया और ऊपर छाती भी रख लिया, नीचे के भी ऑपरेशन करके पूरा निकाल दिया, हम तो औरत बोल सकते हैं। ये लोग कितना भी बाल काट को, मर्द का कैसे बंदी, निकाल को वॉच पहन को, मर्द का कैसे चश्मा पहन को, पैंट शर्ट पहन को, ये छाती को पूरा टाइट से लपट डाल को, पूरा कोट डाल को रोड में जाने से क्या बोलता है, पहला के लिए वो औरत बोले तो उठा के लेके जाकर रैप करता है, बाद में वो लोग को पेट पर आपको रोड में रहते हैं। उसको कैसे हम पुरुष बोल सकते हैं, ऐसा खुद का अपना कम्युनिटी में भी बोलता था। इसलिए उनके बारे में भी किताब लिखना मैं शुरू किया था। 2016 में लंदन में वो किताब, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वो किताब रिलीज हुआ था। वो किताब में भी ट्रांस मैन के बारे में वो किताब लिखता था। वो एक कहानी को हम इधर में लिखा हुआ है, 8 जन का कहानी था उसमें, लेकिन एक टेढ़े गांव में अभी तक उनका जेंडर आइडेंटिटी मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दुनिया में औरत फायदा होएगा तो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, केवल औरत बोलता है उसको, क्योंकि प्रधान का लोग है ये, औरत फायदा होने से भी उनका स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है। उसके ऊपर वो लोग को घर से हम पुरुष बन सकते बोले तो घर में कोई नहीं मानता है उनके ऊपर, फोर्सली उसको मैरिज करता है, डेली हस्बैंड रेप करता है उसको, फिर भी घर छोड़ के बाहर आने से उसको कुछ जगह नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है। ये तो विजयालु का एटलीस्ट हमको नेटवर्किंग है, अपना जमात सिस्टम है, लेकिन HIV एड्स का बारे में हम लोग को काम कर रहे हैं, सरकार भी हम लोग को फंड दे रहे हैं, लेकिन फीमेल तो मेल को वो भी नहीं दे रहे। फिर वो लोग को बाहर आने से उसको बहुत मुश्किल पड़ेगा, अपना कम्युनिटी के अंदर भी उसको जगह नहीं है, बाहर का कम्युनिटी में भी उसको जगह नहीं है, और माँ बाप का अंदर भी उसको जगह नहीं है। इसलिए मैं सोचा है उनके बारे में किताब लिखना बहुत जरूरी है। मेरे को अभी 25 लोग मेरे को बेटा लोग का है, मैं अडापन किया है, इमोशनली इकोनॉमिकली उनकी मैं सपोर्ट करती। 25 जन मेरे को बेटा भी है। वो ये 8 जन का जो किताब लिखा है उसमें से एक स्टोरी के मैं तमिल में पढ़ को मेरा भाषण में खत्म करने वाला है। நான் ஆம்பளைங்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தேகமும் இல்லைங்க. துரதிருஷ்டவசமா நான் பொம்பளை உடம்புக்குள்ள சிக்கி இருக்கிற ஆம்பளை தானே எனக்கு சின்ன வயசுலயே தெரியுங்க. காட்டு சாலையில நாங்க ஒதுக்குப்புறமா இருந்தாலும் கோயிலு, திருவிழா, நல்லது கெட்டது இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஊருக்குள்ளதான் வந்து போகணுங்க. எங்க வீட்டுக்கும் ஊருக்கும் 1.5 கிலோமீட்டர் தேருங்க. ஒரு முறை ஊருக்குள்ள ஒரு வீடு தீ பிடிச்சு எரிஞ்சுது. ஒரே புகையும் ஜனங்களோட கூச்சல் சத்தமும் கேட்டுச்சு. பதறி அடிச்சு ஓடுனேன். ஆம்பளைங்களுக்கு சரிக்கு சரியா நானும் மதில் மேல ஏறி பொட்ட பிள்ளைங்க கொண்டு வர்ற தண்ணிய வாங்கி தீய அணைச்சேன். என்னோட புடவைய
பாவாடையோட சேர்த்து ஓமனமா கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். முக்காவாசி நாங்க தீ அணைச்ச காட்டி தீ அணைக்கிற வண்டி வந்துச்சு. மிச்ச மீதி அவங்க அணைச்சுக்கிட்டு ஏதோ எழுதிக்கிட்டு போயிட்டாங்க. நான் தீ அணைச்சதை பார்த்துட்டு ஊருக்காரங்க என்ன பாராட்டினாங்க. ராமக்கா மக காலேஜ்ல படிக்கிறார். அவ அப்படியே என்ன கட்டி பிடிச்சு கண்ணத்துல ஒரு முத்தம் கொடுத்தான். நான் அப்படியே மெய் செலுத்து போயிட்டேன். அவ வீட்டு நெருப்பு அணைக்க போய் அவ என் நெஞ்சில நெருப்பு மூட்டி விட்டுட்டு போயிட்டான். இது எனக்கு இன்னமும் பயம் அதிகமாச்சு. அவளை ஜோதிகாவாவும் என்ன சரத்குமாராவும் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். ஆடி பாடி என்னுடைய காதலையும் நான் வளர்த்துக்கிட்டேன். நான் படிக்காத விட்டாளு, ஜாதியில கீழானவ. அவளோ ஜாதியிலையும் படிப்புலையும் வசந்தவ. இதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராதப்பா. நம்ம குடும்பம் இருக்கிற நிலைக்கு நம்ம மனசு அலைவிடக்கூடாதுன்னு என்னுக்குள்ளாரையே நான் பழச்சுக்கிட்டேன். பொம்பளை மாதிரி புடவை கட்டி ரவுக்க பாவாடை போட்டாலும் ஆம்பளை மாதிரி கோவணம் கட்டிக்கிட்டு தான் வயக்காட்டுல வேலை செய்யணும்னு ஆசைங்க. அதனாலயே என்ற புடவைய முன்பகுதிக்கு பின்னாடி இடுப்புல செருவிக்கிட்டு ஏர் ஓட்டுவேன், தண்ணி பாய்ச்சுவேன், கரும்பு வெட்டுவேன், கரை பிடிப்பேன், தாம்பு ஓட்டுவேன், போர் மேய்வேன், மாட்டு வண்டி ஓட்டுவேன், நாத்து நடுவேன், நெல் இருப்பேன். ராக்கம்மா மூக்கத்தி தோடு கொண்டையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு லுங்கிய கட்டி சட்டைய போட்டா ஆம்பளை தானே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அவங்க அப்படி சொல்றதால எனக்கு ஒரு வெக்கமும் கவலையும் இல்லைங்க. வாங்கி கொடுத்தா போட்டுக்குவேன்னு சொல்லிவிட்டு என்ற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க. ஆம்பளைங்களுக்கு சரிக்கு சரியா வேலை செஞ்சாலும் கூட ஆம்பளைங்க கூலி எங்களுக்கு தர்றது இல்லைங்க. ஆம்பளைங்களுக்கு 120 ரூபாய் கூலின்னா பொம்பளைங்களுக்கு 70 ரூபாய் தான் கூலி. நான் மத்த பொம்பளைங்களாட்டம் இடுப்ப வளைச்சுக்கிட்டு சாட பேசிக்கிட்டு அடுத்தவங்க கதையை பேசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேங்க. மாடு மாதிரி உழைப்பாங்க. அந்த மாட்டுக்கும் எனக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லைங்க. 3 தங்கச்சியோட மூத்தவளா பிறந்ததால எல்லா வாரமும் என் தலை மேல விழுந்துச்சு. அப்பையும் குடிச்சு குண்டி வெடிச்சு சேர்த்துட்டான். 14 வயசு அப்ப எனக்கு. அம்மா நோயாளி ஜீவன். கூலி வேலை செஞ்சுதான் இம்புட்டு தூரம் எங்களை எல்லாம் காப்பாத்துச்சு. அவங்க பாடும் பெரும்பாடுதான். ஆம்பளை இல்லாத வீடுங்கிறதுனால தெருவுல போற நாய் எல்லாம் எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து உழைச்சிட்டு தான் போகும். முக்கி படிச்சாலும் 5ஆவதுக்கு மேல படிக்க மாட்டேன்னு தங்கச்சிங்க சொல்லிவிட்டாங்க. இரும்பி மருந்து வாங்கி கொடுத்தாலும் தீராத நோயா இருந்த அம்மா. குடிகார அப்ப விட்டுட்டு போன பொட்ட நிலமும் ஓலை குடிசி வீடுந்தான். அதையாவது விட்டு போனான்னு பெருமைப்படுறதா, மழை இல்லாங்காட்டி சோளமோ கம்போ கடலையோ போட முடியாத நிலத்தை வச்சுக்கிட்டு கவலைப்படுறதான்னு எனக்கு புரியல. 4 பொட்ட பிள்ளைங்கள பெத்தவங்க என்ன ஆம்பளை பிள்ளையா பெற்றிருந்தாலும் கூட அதிக கூலியும் வீட்டுக்கு காவலாவும் இருந்திருப்பேன். இப்ப மட்டும் என்ன, வீட்டுக்கு ஆம்பளை மாதிரி காவலா தான் இருக்கேன். கிணத்துல இறங்கி மோட்டார் ரிப்பேர் பண்ணுவேன். படத்தை புடிச்சு இறங்கி கீழே இருக்கிற மோட்டரை கழட்டி மேல ஏத்துவேன். பனைமரத்த மேல ஏறி நொங்கு பறிச்சு போடுவேன். தென்னை மரம் ஏறி சிறை எடுப்பேன். கல்லு கட்டி கல்லு இறக்குவேன். ஆனா வீடு கூட்டி வாசல் பருக்க சொன்னா, சோறு பொங்க சொன்னா மட்டும் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. அம்மாவுக்கு சுகம் இல்லைன்னா என்னத்தான் சோறு பொங்க சொல்லுவாங்க. ஆப்பை விட்டு கிண்டுனா சட்டி உடைஞ்சு போயிடும். அம்மா என்ன தெரியுமா சொல்லுவா, கழுத வயசாயிருச்சு, இன்னும் சோறு பொங்க தெரியல, கண்ணால வெட்டி போற இடத்துல என்ன புள்ளைய வளர்த்துருக்கிறா, சோறு கூட பொங்க தெரியலன்னு என்னதான் கேவலமா பேசுவாங்க. எடுத்தொடப்ப கட்டிய புருஷனாவது கிருஷ்ணனாவது என்னை கட்டி கொடுக்கணும், புருஷன் வீட்டுக்கு அனுப்பணும்னு பேச்சே இருக்க கூடாது. எடுத்த உன்னை தாயின்னு கூட பார்க்க மாட்டேன். குடிகார புருஷனை கட்டிக்கிட்டு 4-5 வெத்து போட்டு அலைய விட்டது பத்தாதா, எண்ணியும் உன்ன மாதிரி நாள வெத்து போடுவீன்னு கனவு கண்டுகிட்டு இருக்காத. ஆம்பளை வாசனையே எனக்கு ஆகாது. பாரு, நான் பொம்பளைக்கு பொம்பளை, ஆம்பளைக்கு ஆம்பளை. உனக்கு மருமகன் எடுக்கணும்னு ஆசையா இருந்தா இதோ 2 பெத்து வச்சிருக்கிற பாரு, வயசுக்கு வந்து நிக்குது பாரு, இதுங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு உன்ற ஆசையை தீர்த்துக்கோ. உன்ற விளையாட்டுக்கு என்ன இழுக்காத. என்ன கூட்டி கொடுக்கணும்னு நீ வாயே திறக்க கூடாது. நன்றி. 20 मिनट का अंदर खत्म करना चाहिए, क्योंकि मैं जो डायरेक्टर बन के एक संगमा में काम किया उसमें मैं पंचुअलिटी और मेरा टाइमिंग का कितना वैल्यू है वो मैं पढ़ा हूँ. इसलिए मेरा टाइम खत्म करके मैं बैठती हूँ. ये इतना तो बात करने के लिए ये जगह में
मेरा राइटिंग का पढ़ने के लिए मौका मिला है। मैं सरकार को भी और साहित्य अकादमी के भी अपना कम्युनिटी परिवार, अपना कम्युनिटी का नाम पे मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। लास्ट फाइनली एक कविता के ऊपर मैं बैठती हूँ। ना बदला दे नंटेगा बदलाय तू ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡೆ ಮೂಗು ಚುಚ್ಕೊಂಡೆ ಬಳೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೂವ ಮುಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾ बदलादे नंटेगा बदलाय तू हमें बदला लिया अपना मन भी बदला दिया हम कान का फूल लगा लिया नाक में भी लगा लिया फूल भी लगा लिया पगड़ी भी पहन दिया लेकिन अपना मन जो फायदा हुआ है वो ऐसी है। तुम लोग हमको मान लेना हम लोग को भगवान करके आप लोग सब नहीं मानना हम भी इंसान हैं बस इंसान का तरीका देखना। It was fantastic performance. It's almost like a performance. It's not like a lecture at all. So it was too good. Thank you very much. And as she said, like almost everyone got one same sentence like that. Even we are also as normal as you. So that is the, I think, essence of the entire session. There's no difference. We all are same. Treat us equal. Don't show sympathy. Just be empathetic and be one among us. So that's what we look forward. Thank you very much for providing this opportunity. Thank you, Sahitya Academy. On behalf of all of us, I heartily thank all the participants and the chair, Vasudhendra ji, for this brilliant session. This was so excellent an experience. Here, I personally salute Revati ji because in the stream of her expression, she spoke about the section of her community who is facing even more problem than hers. So here, creative abilities not only transcend time and space, but gender as well. We are one, and I am proud of you, standing with you. Thanks a lot. The session will continue tomorrow, 10 o'clock, right at same place. Welcome you all. Now we will move to Meghdut Theatre to enjoy Nizami